हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी और फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और हाँ भाई, हमने काफी डिस्कस किया अबाउट ला लीगा, अबाउट द स्पेनिश फुटबॉल एंड व्हाट नॉट इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। लेकिन यार बैक टू प्रीमियर लीग, क्योंकि यार हाँ आई नो फुटबॉल इज लॉट हैपनिंग यार इंग्लैंड में हमेशा जनवरी में, बट चेल्सी में इतना बवाल मच रहा है। वी ऑल नो ट्रांसफर विंडो इज गोइंग ऑन, और आज भी काफी सारी न्यूज आ रही है व्हेन इट कम्स टू चेल्सी एंड जो इंटरलिंक करते हैं, नॉट जस्ट चेल्सी, ऑफ कोर्स अदर क्लब्स भी, when it comes to Arsenal, Manchester United, Liverpool और कहीं ना कहीं बार्सिलोना भी। तो हम डिस्कस करेंगे मेनली ट्रांसफर विंडो विल बी द डिस्कशन, स्क्वाड बेसिकली सिलेक्शंस, आपका बेसिकली कौन सा प्लेयर आपको रखना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, बीट इन चेल्सी, बीट इंटरलिंक टू अदर क्लब्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट न्यूज है हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर डिस्कशन यार मैं सोचा बेस्ट टू हैव इट ऑन डिस्कॉर्ड, काफी दिनों से हो रहा है भाई, मेंबर स्ट्रीम भी ड्यू है, सब्सक्राइबर्स के साथ भी एक बात करनी थी। तो भाई हु एल्स दैन श्रेय पाटिल जो आया हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप, भाई प्रथमेश भी ज्वाइन करने वाले थे। भाई श्रेय भाई, क्या लग रहा है भाई, हाउ आर थिंग्स इन चेल्सी? मतलब डामाडोल है व्हेन कम्स टू ऑन द पिच, बट ऑफ द पिच एक्साइटमेंट की है, यू आर सेइंग कि यार नहीं वापस से लुकाकू पार्ट 2 हो रहा है। लेट्स सी। अभी रीसेंट विन से बहुत कॉन्फिडेंस तो आ चुका है, बट लेट्स सी। अभी नए प्लेयर्स आ रहे हैं, महंगे महंगे प्लेयर्स आ रहे हैं, सो अभी देखते हैं। एक्साइटेड तो हूँ नए नए साइनिंग्स को खेलते वक्त देखते हुए, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मानव बोल रहे, मानव थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग यार, ऑलवेज यार भाई। सब लोग जो भी जुड़े हैं सबसे पहले लाइक बटन जल्दी से दबा दीजिए यार, यू नो दैट लाइक यार ज्यादा टारगेट नहीं है अपने को, 150 लाइक्स करने इन द फ्यू मिनट्स, इफ यू गाइस कैन गेट क्लोजर टू दैट ब्रिलियंट, सो दैट यूट्यूब बताए भाई हम लाइव है और हम बात करने वाले हैं लॉट। रिमेंबर इट इज बेसिकली अ मेंबर्स कम सब्सक्राइबर्स स्ट्रीम, आप लोग ज्यादा बात करोगे, मौका है आपको, आपके पास बहुत दिनों से आप लोग चाह रहे थे, तो इसलिए मैं ये स्ट्रीम लाया हूँ, बिकॉज मैं अपना राय बोल सकता हूँ। यस आई नो, बाय द वे मैंने पोल भी डाला था, it is difficult to get a panel with only say Chelsea supporters all the time इतना, तो मैं सोचा बेस्ट इज टू टॉक टू सब्सक्राइबर्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलेगा काफी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू भी, और चेल्सी और श्रेय इज ऑलरेडी हियर। तो हाई टाइम पॉटर यूजेस जिएश और सेल्स हिम वंस एंड फॉर ऑल, he has revived his career post World Cup, playing great for Chelsea. Now श्योर he श्योर। needs to be regular for a team. तो भाई I don't disagree with that fact मानव, absolutely, लेकिन वही है, मैंने कल पोस्ट किया था ऑन इंस्टा स्टोरी। चलो जीएस से शुरू करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आज न्यूज आया है, बाय द वे बिग अप टू पुदिन, निश्चित एंड एवरीवन इन द हाउस, अगेन हिट दैट लाइक बटन, हो सके तो आप शेयर कर सको तो ब्रिलियंट यार, डू हिट दैट लाइक बटन इन अ कम्युनिटी पोस्ट भी, सो दैट यूट्यूब प्रमोट करे। बट श्रेय, क्या लग रहा है आपको यार? द फैक्ट इज जिएश, रूबन लॉफ्टस-चीक और कॉनर गैलेगर तीनों लिंक्ड हो रहे हैं न्यूकासल के साथ, and pretty sure Newcastle kind of likes players like a Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek over the years. I feel कि या वो तो फिर भी मैं देखता हूँ नॉट बोथ एक जन जाते हुए, लेकिन जिएश, अब जिएश वाज वेरी क्लोज टू मिलान, आपको पता है जो वर्ल्ड कप हुआ था या आफ्टर दैट, बट अभी जो इंजरी सिचुएशन है, प्लस यस आई नो हमने फिलिक्स साइन किया है जो सस्पेंडेड है, ऑफ कोर्स मुड्रिक जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे विद सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट जिएश इन पर्टिकुलर, क्योंकि ही इज द ओनली लेफ्ट फुटेड विंगर वी हैव। या श्योर। लाइक पहले जो जो जिएश खेलता था वो पॉटर के अंडर था, और सॉरी टुकल के अंडर था, टुकल। एंड अभी पॉटर आई थिंक बेटर यूज कर रहा है आई गेस। एंड जो वर्ल्ड कप के बाद से जो जिएश आया है, वो हमें लाइक डेफिनेटली अलग अलग, एंड लाइक उसे उसमें लाइक वो अलग स्पार्क आ चुकी है, बोल सकते हैं कि करियर का नया फेज चालू हो चुका है उसका। बेसिकली उसको गेम टाइम ज्यादा मिल रहा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले इन चेल्सी, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। कि पॉटर आई थिंक हमारे पुराने प्लेयर्स को बहुत यूज करने का ट्राई कर रहा है। आई थिंक मैंने एक आध दो कमेंट भी पढ़े थे कि पुलिसिच इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज आवर प्लेयर और समथिंग, ऐसे बोल रहे थे पॉटर। सो आई होप कि ये प्लेयर्स रहे अच्छा खेले। वी आर फेड अप ऑफ दीज प्लेयर्स, बट अभी देखते हैं क्या होता है, कि आने वाले फेज में ही पता चलेगा कि कैसे जेल अप करते हैं टीम के साथ। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अगेन नीरज, बिग अप आपको भाई, अजिंक्य, बिप्रा भाई, सब लोग, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन, और अगर शेयर कर सकते तो ब्रिलियंट। व्हाट यू कैन डू इज भाई, जो भी लोग ट्विटर पे, यू कैन रीट्वीट, मैंने अभी भी ट्वीट किया है, उसमें लिंक भी है, दोनों डिस्कॉर्ड और यूट्यूब का लिंक है, तो अगर आप रीट्वीट कर सकते हो ब्रिलियंट है, और यू कैन पुट इट अ स्टोरी, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और सिंपली पुट स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, एट द सेम टाइम आप कम्युनिटी पोस्ट को लाइक कर दीजिए, सो दैट यूट्यूब बताए कि हम लाइव है।
Hi Ankit bhai, Sky News just reporting that Sir Jim Ratcliffe has entered the procedure to buy Man United. He also owns nice club in France. Well, I know Ratcliffe शायद हमारे से भी लिंक थे, जहाँ I think when Roman was kind of leaving, I remember doing that stream. लेकिन I think Ratcliffe I think has a history when it comes to Manchester United. तो I won't be surprised नीरज कि वो हो, लेकिन I think Manchester United उस कगार पे नहीं है कि यार they want to sell like immediately. But I think I know Glazers out हो रहा है बहुत सालों से, but I don't think वो होने वाला है anytime soon unless उनको एक मिले एक fantastic offer. मुझे लग रहा है it's more about business, honestly speaking. और वो टाइमिंग वो कोइंसिडेंस थी यार, रोनाल्डो बाहर गए उस समय बेसिकली ग्लेजर्स ने बोला कि यार इट्स फॉर सेल एटसेट्रा, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स फॉर सेल इमीडिएटली. I think they're looking for a good value. अब देखते हैं who's able to give that. ये बोली को कोई समझाए कि don't sell all players to direct rivals. That's a very good point. अजिंक्य बोल रहे भाई, वही इसलिए मैं बोल रहा था. Ziyech as much as basically बोल सकते हैं in the past जो न्यूकासल में इतना नहीं सोचता, लेकिन आज के दिन में मतलब एज थिंग्स स्टैंड, मतलब श्रेय आपसे पूछता हूँ भाई, अगेन पीपल ने चार आप लोग भी बोलिएगा, लेकिन क्या लगता है मतलब व्हाट इज योर टॉप 4 प्रेडिक्शन एज थिंग्स स्टैंड? टॉप 4 प्रेडिक्शन, I'd say Arsenal, then City. ये दो आई गेस फिक्स ही है सबके इसमें. थर्ड आई एम सेइंग जिस फॉर्म में मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन न्यूकासल. ओके, इंटरेस्टिंग. और चेल्सी कहाँ कहाँ देख रहे हो? आई नो अभी तो टॉप 9 में नहीं आई दिख रही है. से मे बी यूरोपा और कॉन्फ्रेंस मे बी स्पॉट, आई एम नॉट अरे श्योर. भाई साहब, ऐसे लाइक एक कॉन्फ्रेंस मत दो चेल्सी यार, फैन यूरोपा को. दे दो. मैं तो बोलता हूँ यूरोपा 2 बार गए, 2 बार जीते, फॉर ऑल द पीपल हैव फॉरगॉटन. या लेकिन या हो सकता है कॉन्फ्रेंस में भी फर्स्ट टाइम, हु नोस, बट नॉट दैट आई वांट इट. जस्ट सेइंग विप्रा भाई, अच्छा 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 अटेम्प्ट था. नॉट सक्सेसफुल, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट था आपको बोलना. बट कोई नहीं भाई, आर्सेनल फैन विप्रा इन द हाउस. डिड यू सी जीएच रिएक्शन टू द गोल असिस्ट? ही इज जस्ट लाइक दैट और ही इज अनइंटरेस्टेड. नहीं नहीं, जीएच मैं रिएक्शन से नहीं देखता हूँ. आई नो मेसन माउंट ने बहुत ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया भाई. व्हाइल आई स्टिल बिलीव मेसन माउंट हैज द क्लब ऑन इन हिज हार्ट, लेकिन मुझे लगता है मेसन माउंट ज्यादा एक्सप्रेसिव है, जीएच नहीं है. सिंपल एज दैट. वहां पर ज्यादा रीड मत करिए. द गाई ऑन द पिच जो दिखाते हैं दैट टेल्स यू मोर देन द सेलिब्रेशन ब्रो, सच में बोलता हूं. एंड आपने वो गोल देखा जो लाइक बेंड होके अंदर जाता है जीएश का, उसके बाद भी वो सेलिब्रेट नहीं किया था लाइक. हाँ, स्पर्स के लाइक साथ था उसे ना लास्ट सीजन, स्पर्स स्पर्स के के साथ था साथ वो भी. एग्जैक्टली. या या एग्जैक्टली, या वेरी वेरी वेल पुट. जीएस इज दैट काइंड ऑफ अ गाय अजिंक्य, सच में इंटरेस्टेड मन देखो. वही प्रॉब्लम है, बहुत लोग अज्यूम करके बोलते हैं यार दिस इज हाउ इट इज. मतलब अगेन मैं बोलता हूँ कि जीएस शुड मूव ऑन फॉर हिज करियर, मैं सच में बोलता हूँ. लेकिन साथ साथ में लाइक आई सेड, हमारे पास इतने सारे इंजरीज है, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है फाइनल थर्ड में, और हमें चाहिए एक प्लान बी. ही इज अ प्लान बी जो आपका लेफ्ट फुटेड आपके पिंग करेंगे ऑन द फार पोस्ट. अगर बाई चांस अगर मुड्रिक चले तो ग्रेट है, नहीं तो बैकअप आपके पुलिसिक है. आई नो मुड्रिक पर बात करना है एब्सोल्युटली. निश्चित बोले प्रायोरिटी फॉर चेल्सी इज अ मिडफील्डर, 100% agreed. The one they appreciate is Moises, Caicedo, but there are many on the list. They are speaking with many players in general. It's how they work. निश्चित वही नहीं, आप थंबनेल में देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ व्लाहोविच क्यों डाला है. There's a lot of news coming on कि यार क्लियर आउट हो रहा है, and that is a reality. It's just not Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher में से एक जन, Ziyech, बट पॉसिबिलिटी है कि यार ओबामियांग इन द समर होने वाला है इवेंचुअली. यू नो दैट वो पॉटर के प्लान में नहीं है. यस, इवन लास्ट मैच में ही वाज ट्राइड, फाइनली वो आया पिच पर श्रेय, लेकिन उसका एक था कि उसको बॉल रखना है लास्ट 5-10 मिनट में, वो नहीं रख पाया यार. तो आई थिंक कहीं ना कहीं देन मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों आप मिला के बोलोगे ही इज नॉट स्टार्टिंग मटेरियल इन चेल्सी. और जब वो बेंच पर रहता है, हमें पता है ओबामियांग कैसे रहा है इन द प्रीमियर लीग इन द पास्ट. ही डजंट लाइक इट ऑन द बेंच, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो आई थिंक ही इज गोइंग राइट, प्रीटी श्योर समर में, नॉट रियली राइट नाउ. या इट लुक्स लाइक लुकाकू पार्ट 2 एंड अरे भाई साहब, like विदाउट सो मच मनी, लेकिन yeah without money but still like time waste basically. जो like lack of ambition, maybe age हो रही है. एंड let's see अभी कैसे like ऐसा प्लेयर तो नहीं है कि वो like he is going to be a legend for Chelsea और जो चेल्सी के लिए खेलता है like a Conor Gallagher. So that's why I feel like कि अगर वो खेल भी गया, maybe 10 गोल्स मार भी दिए, फिर भी like उसका मैसिव सीजन नहीं होने वाला जो उसे नेक्स्ट सीजन हेल्प करेगा. सो या इंटरेस्टिंग है. टॉप 4 देख रहा हूँ सार्थक.
बायर्न म्यूनिक चैम फर्स्ट, यूनाइटेड बोल रहे हैं, सार्थक बोल रहे हैं आर्सेनल फर्स्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड, चेल्सी टॉप 4 में डाले सार्थक, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक मैं बोल रहा हूँ, पुतिन भी डाले भाई चेल्सी को फोर्थ में भाई साहब। हेलो Am टू I the टॉक only बारसा, Chelsea एब्सोल्युटली टॉक fan? बारसा, इनका भी चैनल है, नाइस टू सी यू ब्रो, हाउ आर यू, बिग अप अंकित, बिग अप टू लू मैन एज वेल। बाय द वे आज ये होने वाला है, लाइक आई सेड भाई, सब लोग ऋषि की बात सुनिए, सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, 35 लोग देख रहे हैं, होपफुली वी कैन हैव डबल द नंबर। याद रखिए दिस इज द स्ट्रीम फॉर यू गाइस, हम शुरू में बात करें अबाउट चेल्सी ऑब्वियसली, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन जो भी आर सब्सक्राइबर या मेंबर, ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेंबर्स ऑब्वियसली दे डिजर्व इट एज वेल, मेंबर्स विल गेट द प्रायोरिटी। तो अगर आते हैं पीपल यू नो टू स्पीक ऑन द डिस्कॉर्ड लिंक, मेंबर्स probably will get the priority, लेकिन it is welcome for everyone भाई, सब लोग वेलकम हैं, तो डू कम ऑन देयर। लेकिन कौन सा चैनल इन डिस्कॉर्ड दैट विल बी टेलिंग इन अ फ्यू मिनट्स, आई जस्ट वांट टू गो गेट थ्रू अ कपल ऑफ ट्रांसफर स्टोरीज और फिर हम शुरू कर देंगे वो चीज। मैं क्या कर देता हूँ मीनवाइल, लेट मी एक्चुअली पिन द डिस्कॉर्ड लिंक, आई नो डिस्कॉर्ड काफी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, नहीं ये तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, हर एक डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड लिंक अपना रहता है, नहीं तो मैं अपना कमेंट देकर पिन करना भूल गया शायद, लेट मी जस्ट पिन इट राइट अवे so that no we can have that, let me actually put it again and pin it actually on, let me एक सेकंड दीजिए मुझे यार meanwhile। तो कॉनर, you are in favor on Conor Gallagher staying right श्रेय? Yeah, sure. I think रीजन उसके क्योंकि इंटरव्यू, चेल्सी थ्रू एंड थ्रू, दैट्स द रीजन यू या थिंक, उसके यंग गाय? इंटरव्यू से ही पता चलता है कि लाइक वो खेलना चाहता है, एंड लाइक मे बी स्किल्स नहीं होंगे, मे बी लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं होगा, बट स्टिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट फॉर चेल्सी, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। सो I'd have like 10 people like Conor Gallagher rather than like big signings, you know. ओके, फेयर इनफ। और अगेन मेसन माउंट, काफी लोग बोल रहे हैं यस नो नो वाला चीज हो रहा है अगेन भाई, आई वोंट से दैट यू हैव टू बिल्ड द स्क्वाड अराउंड मेसन माउंट, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई अगर वो मानता है एट अ लोअर सैलरी देन व्हाट ही इज डिमांडिंग, आई थिंक वो स्क्वाड का मेंबर है, डेफिनेटली इन माय ओपिनियन अगर हम इवेंचुअली 4-3-3 जाते, आई थिंक विल बी अ डिसेंट प्लेयर इन 4-3-3, इज अ नंबर 8, इज नॉट अ नंबर 10 रियली, जो यू नो Yeah. पॉटर ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक हैवर्ट्स इज मोर अ नंबर 10, अगेन नॉट अ प्रेफरेंस, मैं बोलता हूँ फिलिक्स इज ब्रिलियंट नंबर 10 में, हैवर्ट्स विल बी द बैकअप रियली, लेकिन स्ट्राइकर अभी भी चाहिए, विच इज वाई व्लाहोविच की बातें चल रही है, आई नो लोग पूछ रहे सेंट्रल मिडफील्डर और राइट बैक का क्या, तो मैं इतना बोल देता हूं दैट कैसेडो का आई बिलीव सो, मतलब ये गट बोल दो जो भी बोल दो, और गोइंग बाय फेब्रिशियोस वीडियोस, गोइंग बाय लॉट ऑफ चीज, मुझे लग रहा है कैसेडो एटलीस्ट बिड तो डेफिनेटली जाएगा श्रेय चेल्सी द्वारा, अब वो क्या होगा बिड के साथ ब्राइटन पर निर्भर है, कैसेडो खुद पर निर्भर है, बट आई थिंक बिड तो डेफिनेटली जाएगी। अब आई नो डेक्लन राइस टू आर्सेनल भी साथ साथ में चल रही है, तो दैट मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट कि अगर वो होने वाला है इवेंचुअली दैट वी माइट एक्चुअली यू नो गो फॉर कैसेडो। मैं तो देख रहा था अभी कैसेडो आ जाए समर में, डेक्लन राइस आ जाए, दैट विल बी ब्रिलियंट, और देन वी माइट गेट रिड ऑफ रूबन लॉफ्टस-चीक एंड कॉनर गैलेगर इन द लॉन्ग रन, नॉट इमीडिएटली, अब इमीडिएटली तो रूबन लॉफ्टस-चीक डेफिनेटली, लेकिन समर में देख रहा था गैलेगर अगर वो ही इज नॉट एबल टू स्केल अप इन द नेक्स्ट 5 मंथ ओनली देन, लेकिन देखते हैं भाई, लगता है चेल्सी 2 बिलियन का स्क्वाड बना रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ पोटेंशियल स्टार्टिंग 11, पोटेंशियल बैकअप 11 चेल्सी का, अगर सब लोग फिट होते हैं नहीं होते हैं, मतलब ये सब चीज है आपको दिखाई दिखेगा भाई, इतना बड़ा स्क्वाड है अभी श्रेय एज थिंग स्टैंड, मतलब आई डोंट नो, मतलब इसमें भी आपको दिख रहा है दैट कहीं ना कहीं वन वन पोजीशन जहां पर मिसिंग है, इट इज बेसिकली राइट बैक। आप देखो तो हर जगह वी आर हैविंग 3 पीपल। हाँ थोड़ा सा आप बोलोगे एंड्रे सैंटोस अभी भी आई थिंक वर्क परमिट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, तो वो आई डोंट थिंक हैज टेकन अ नंबर येट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Hmm. लेकिन Yeah. अपार्ट फ्रॉम दैट हर जगह पे हमारे 3 लोग हैं, आई नो इसमें से 11 लोग इंजर्ड है, तो दैट इज अ फैक्ट, बट श्रेय व्हाट इज योर प्रायोरिटी पोजीशन अभी अगर चेल्सी जाना है, मतलब इज इट अ मिडफील्डर और राइट बैक, और मतलब दोनों इज द आंसर, बट व्हिच वन मोर? Like unless चालोबा को राइट बैक मेक शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर तो लाइक आई थिंक राइट बैक ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए अभी, बिकॉज या एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो अटैकिंग थ्रेट दो रीजियन जैसा, एंड क्रॉसेस डाल सके, वैसे हमारे पास स्ट्राइकर है ही नहीं, क्रॉसेस किसके लिए डाले, बट स्टिल सो आई थिंक कि जहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए वो राइट बैक है, एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि एंजो फर्नांडिस के लिए वो सब नाटक कर दिया, एंड अभी डेक्लन राइस भी हाथ से चले जा रहा है, एंड कि मिडफील्ड का इशू सॉल्व ही नहीं हो रहा, कि कांटे पूरा साल इंजर्ड रहता है एंड अगले साल क्या कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, लेट्स सी, सेंटर मिडफील्ड एंड राइट बैक विल बी द आंसर।
Okay. तो first center midfield, then right back. Ankit bhai, how about Vlahovic on loan with buy option? Honestly, मतलब हमें चाहिए एक number 9 यार. मतलब that is the reality. I think Datro Fofana will be going on loan. I don't see him as a starter. और at best plan भी हो सकते हैं अगर ओबामयांग जा रहे anyway in summer. लेकिन अगर summer में जा रहे हैं तो आप summer तक ओबामयांग को रखो एक plan भी. आपके plan है you have to sign someone. I generally feel yes midfielder is 100%. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ midfielder priority है. और यस निजार कंसेला ने कंफर्म किया था, मैंने शेयर भी किया था पिछले स्ट्रीम में, दैट अगर हम लोग किसी और को साइन करें ओवर द इयर्स ऑफ 21 हम उसको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे अंटिल वी डी रजिस्टर और सेल समवन एल्स. और इसलिए बात चल रही है अबाउट कॉनर गैलेगर, अबाउट रूबन लॉफ्टस-चीक जो यू नो इज बैक इन द बेंच बाय द वे, रूबन लॉफ्टस-चीक लास्ट मैच में. तो आई थिंक विद लॉफ्टस-चीक गोइंग आई थिंक हमारे पास एक स्पॉट बन जाएगा और वो हो सकता है कैसेडो ले ले अगर आते कैसेडो, दैट माइट बी वन. लेकिन अगर स्ट्राइकर आते से फॉर एग्जांपल ऑफ व्लाहोविच इन द बेस्ट केस सिनेरियो या मार्कस तुराम, तो आई थिंक वी स्टिल नीड टू गेट रिड ऑफ वन मोर प्लेयर. तो यहीं पर आई थिंक कहीं ना कहीं वी आर थिंकिंग, आई नो मडुवेके लिंक्ड है बिकॉज ही इज 2021 बहुत एक्सपेंसिव है. लेकिन तो हो सकता है अगर जीएस जाते हैं मडुवेके आते हैं तो जीएस के साथ एक स्पॉट खाली हो जाएगा. बट फिर क्या होगा श्रेय, मडुवेके कैन कम और एक स्ट्राइकर भी आ सकता है बिकॉज मडुवेके लेस देन 21 इयर्स ऑफ एज, तो हम दोनों रजिस्टर कर पाएंगे. दैट इज समथिंग दैट मे बी चेल्सी सोच रही है. तो मुझे लग रहा है जीएस एक्चुअली माइट लीव एज मच एज मैं चाहता नहीं हूँ इस विंडो में. ही माइट लीव बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज हमने इतने सारे प्लेयर्स को साइन कर लिया है जो आधे इंजर्ड है. तो ना तो हम उनको सेल कर सकते हैं और अगर हम लोग डी रजिस्टर कर रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ नॉट गुड एज वेल राइट फॉर देम. सो आई डोंट थिंक इट विल वर्क, बट लेट्स सी. लोग क्या बोल रहे हैं इन द चैट. मुड्रिक और स्टर्लिंग, भाई मुड्रिक एब्सोल्युटली क्या बोल रहे हो. जस्ट टेल मेसन माउंट, नो हेट, but if they are serious about a rebuild, he has to go. Just while as much as I understand your point about rebuild, if I have to put my 2 cents around it, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेसन माउंट इज अ नंबर 8. he is someone who works hard for the team. आप उसको क्रिएटर और मेन एंड प्रोडक्ट वाला बंदा आप सोच रहे हो तो वो नहीं है. ही गेट्स यू. और प्लस हम लोग काफी बार भूल रहे, यस एक होता है एंथू द पर्सन इज प्लेइंग विद, वो नहीं दिख रहा है कंपेयर टू जो कर रहा था. Why are we so short-lived in football? With all due love and respect to everyone in the chat, by every Chelsea fan, every neutral bhi, why are we so short-lived in football? Mason Mount is a 2-time Premier League, as in Chelsea Player of the Year. इतने इस एज में if you're getting that आप, you're not so bad all of a sudden. I think somewhere down the line it has to do with his contract talks. He is human, अभी भी काफी young है. It is got to do with that. Somewhere down the line it is a fact that manager change, ownership change. Mason Mount जैसा player नहीं देखा होगा भाई अपने career में, तो it's all new for him. So for me you have to give him time. I'm not going to say that he's going to be a fulcrum. आप I agree rebuild करना है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4-3-3 खिलाओ with number 8. If you're continuing with the 4-2-3-1, he's your plan B. Play Havertz as your number 10 or get Mount as a substitute. And इसीलिए मैं बोल रहा हूँ salary you don't offer him much. I don't know, what do you think about this? I think Shrey's on mute anyway. Let me just yeah, I'm not on mute actually. मैं Discord check कर रहा था. But ओ yeah. अच्छा. हाँ मतलब हम लोग शुरू नहीं किया यार, हम लोग शुरू करने वाले हैं. लेट्स हैव मोर पीपल इन भाई. सब लोग एवरीवन इन द चैट हिट दैट लाइक बटन यार. लेट्स हैव मोर पीपल इन. और इसलिए हमें जानना है आपका पर्सपेक्टिव भी. सार्थक पूछ रहे व्हाई वुड मेसन माउंट पर, एनीवे वी हैव स्पोकन, विल कम बैक टू इट. सार्थक बोल रहे व्हाई वुड डूसान लीव, you are finally back. Also Pogba is almost back with Fresneda, maybe incoming, plus Chiesa fit है. सार्थक I hear your point, लेकिन bottom line being that the financials of Juventus are in a mud और वो है he might be available. Also आप बोल रहे हो फॉर्म में है भाई, Milik is in form, might be that they'll prefer Milik or they can get rid of Vlahovic. चाहेंगे नहीं, but I think if it's raising money for them, why not? I think money talks. Remember he's not Italian, he can मतलब compared to other players वो ज्यादा liable है for him to move. मैं ऐसे नहीं बोल रहा होने वाला है, but the fact is अगर मुझे बोला जाए कि आपको चाहिए मार्कस तुराम या दुसान व्लाहोविच, मैं obviously चाहूंगा दुसान व्लाहोविच. There's no two ways about it, right Shrey? दोनों में. Like ज्यादा इटालियन लीग देखता नहीं मैं, but yeah, I guess I'm not going to really talk much about it. If I have to get 2 words from Shreyar on Mudryk, what is your opinion? मैंने काफी बोला है, I don't know if you heard it. As much as people are downplaying it, हंस रहे हैं and all those, and I understand हमने डबल पे किया है, but at this point in Chelsea को करना पड़ेगा if you have to upgrade our final third.
और आई थिंक पीपल हैव नॉट सीन हिम इनफ. यस, वो इतना ज्यादा खेला नहीं, बट बंदा सच में ही हैज स्टार क्वालिटी. आई जेन्युइनली बिलीव इट, ही हैज इट इन हिम. बट व्हाट इज श्रेय थिंग? आई डोंट नो, लेट मी नो. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास स्लॉट्स ही नहीं है और प्लेयर्स डालने के लिए. सो दिस वाज बेसिकली आवर लास्ट शॉट टाइप ऑफ, कि जितने कैश स्प्लैश कर सकते हो उतने कर दो एंड लेके आओ उस प्लेयर को. एंड ऊपर से लाइक आपने वो इंटरव्यू देखा जो शाख्तार के सीईओ के साथ हुआ था? हाँ आई गेस बिल्कुल, आज. ऑक्सफोर्ड पर या हुआ था आज. एंड मैंने देखा और क्लियरली हम दिसंबर से बात कर रहे थे. फॉर ऑल दोस पीपल थिंकिंग दैट हमने खाली हाईजैक मोड में खेला है, ये वो हुआ है या इन द एंड, बट दैट इज नॉट एंटायर स्टोरी. या द स्टोरी इज कि आर्सेनल ने भी सेम ही अमाउंट पे करने के लिए रेडी थे, टीम में जो स्ट्रक्चर टोटल अलग है, 100 प्रोजेक्ट अलग है. 100 बिलियन है. या बट जस्ट कि हम जल्दी पे कर रहे थे एंड हमारे जो क्लॉज थे वो ज्यादा रियलिस्टिक लगे उन्हें. रियलिस्टिक का. सो या सो एंड वी आर एंड चेल्सी. लेट्स से इट यार श्रेय, वी आर चेल्सी. दैट्स अ या रियलिटी. एज मच एज आर्सेनल अभी टॉप है भाई. देखो मतलब आर्सेनल की हिस्ट्री इज डेफिनेटली ग्रेटर देन चेल्सी. बोथ हैव हिस्ट्री. आई एम नॉट ट्राइंग टू से बोथ डोंट हैव. बोथ हैव हिस्ट्री. आर्सेनल एज अ हिस्टोरिकल क्लब आप डेफिनेटली बोलोगे, लेकिन यहाँ पर क्लियर बात है, फॉर समवन लाइक मोड्रिक हु इज राइट नाउ व्हाट 22, जितना उसने खुद ने देखा होगा फुटबॉल, ही वुड बी मोर इंस्पायर्ड बाय चेल्सी. लेट्स बी रियल. या बिकॉज ऑफ ट्रू. वो लास्ट 18 साल में चेल्सी ने किया है, तो उसने तो वही देखा है ना, चेल्सी के प्राइम देखा है. तो थिंक अबाउट इट पीपल. बट एनीवे, chalo, these guys rant Mason Mount because of he was so good at the time of Champions League. He was a player of a dream, but now his role changed and people are not understanding it. He's now mad in defense. भाई आकाश, thanks for saying that यार. भाई काफी कम लोग हैं were actually saying that. भाई सब लोग लाइक कर दीजिए, उससे ही बढ़ेंगे लोग यार. तो लाइक एब्सोल्युटली. और यहाँ पर एक लाइक टारगेट है. जस्ट वाला बोल रहे हैं, बट अंकित, मेसन माउंट्स बिकम रियली सेल्फिश, doesn't pass to others. No, I don't think. See, we are assuming that it's selfish. Yes, it might be truth. I'm not saying, but to say that the guy needs to get out after doing that for 2 months compared to जो किया उसने 2 सालों से पहले, वो थोड़ा अनफेयर है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं देर इज अ प्रॉब्लम इन मेसन माउंट. मैं अग्री करता हूँ, देर इज अ प्रॉब्लम 100%. वो बंदा डिजर्व नहीं करता स्टार्टिंग 11 में होना 100%. बट ऑल ऑफ अ सडन ही डिजर्व्स टू बी आउट ऑफ चेल्सी. I don't deserve it, believe in that. He needs to be spoken to. He's a boy still. He's not even a man. So he's a boy still. He needs to be spoken to. And that is what. भाई कल को अगर एम्बापे, भाई सेल्फिश का डेफिनेशन है एम्बापे. Let's be very real about it. PSG सच में उसके कारण खाली बेच देती एम्बापे को एट अ लॉस. नहीं यार. मैं रोनाल्डो कंपेयर की बात. मैं एम्बापे मेसन को कंपेयर नहीं करा, लेकिन सिचुएशन सिमिलर है. बोथ वर सेल्फिश, या यू कैन से. So you cannot, and we have very few star players in Chelsea. Let's be very honest. We have very few star players in Chelsea. He has to be around the squad who understand Chelsea, who care for Chelsea at least to some extent. Again, we can agree to disagree. We respect every opinion. People have accepted Hendrick for 60 million, but not Mudryk, who had played amazing. Put in itna hi nahi. Anthony भाई, people have, with all due respect, मैं एंटनी का फैन था. एंटनी people have accepted. Pepe 70 million people had accepted initially. अभी तो भाई काफी ट्रोल मिलता है. I know there are a lot of examples in football. मैं again I'm saying we have overpaid 100%. हमने डबल पे किया है, लेकिन the guy is not shit. What people think, he's not a nobody. For once we have at least scouted something. Let's appreciate them, in my opinion. As long ट्रू. as वो मिडफील्डर लाते तभी, राइट. अगर नहीं लाते या मिडफील्डर, तब वी आर गोइंग बैक एंड सेइंग इट डेफिनेटली, राइट श्रेय. या चलो हम लोग लेट्स. क्या बोलते हो श्रेय, शुड वी स्टार्ट? या श्योर श्योर श्योर. तो अब पीपल इन द चैट, कोई वेट कर रहा है क्या डिस्कॉर्ड में? नहीं, एक्चुअली चला गया. तनिष्क आई गेस आया था. हाँ चलो भाई, तनिष्क थोड़ा सा वेट इफ यू आर कर रहा वाचिंग. है भाई. एवरीवन इन द चैट, मैंने पिन कर रखा है. दिस इज अ डिस्कॉर्ड लिंक. और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला है, मेंबर्स आई वुड एक्सपेक्ट एंड होप दैट मेंबर्स तो डेफिनेटली जुड़े, बट इवन सब्सक्राइबर्स, एनीवन हु वांट्स टू कम टू डिस्कॉर्ड इज वेलकम. और कौन सा चैनल में आना है ऑन दैट लिंक, वंस यू आर ऑन डिस्कॉर्ड, डू लेट अस नो सो दैट श्रेय कैन गाइड यू. श्रेय, विच चैनल ऑन डिस्कॉर्ड आर वी लुकिंग एट? पहले लिंक पर क्लिक करिए, पिन्ड कमेंट है. या Whoever wants. इन आवर डिस्कॉर्ड मैं और अंकित भैया बैठे चिल. इसमें जनरल एरिया के अंदर चिल करके एक चैनल है, उस पे Okay. ऑडियो आप ज्वाइन कर सकते हो.
ठीक है। सो भाई एवरीवन, एंड द इनवाइट गोस टू एवरीवन, जो भी लोग अभी देख रहे हैं लाइव, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए, सो दुनिया को मालूम पड़े कि भाई हम बात कर रहे हैं आप लोग के साथ, ठीक है। पिंड कमेंट, जैसे ऋषि बोल रहे हैं, द लिंक इज इन द पिंड कमेंट, इट इज अ डिस्कॉर्ड प्लस, डिस्क्रिप्शन में भी हमेशा रहता है, बट मैंने पिन करके रखा है। वो अपने ऑलमाइटी ब्लूज का डिस्कॉर्ड चैनल है, कम ऑन दैट। इनसाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखेगा चिल, देयर इज अ चैनल नेम चिल, नॉट चिल 1 चिल 2, चिल करके है, उसके ऊपर चिल करके है, उसमें आप क्लिक करिए, यू विल बी देयर, एंड देन यू कैन प्रॉब्ली डिस्कस अबाउट, यू माइट बी अ चेल्सी फैन, यू कैन बी अ प्रीमियर लीग फैन, मैं तो बोलता हूँ इवन बारसा फैन, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वील बी टॉकिंग अबाउट कीप सेल लोन, विल टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स। आई वांट टू नो जस्ट योर ओपिनियन, बिकॉज काफी लोग से पीपल वांट टू एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम पुदिन, नेक्स्ट टाइम मे बी। मीनवाइल मैं कमेंट्स लेते जाऊंगा, हम बात करते जाएंगे व्हेन इट कम्स टू कीप सेल लोन। तो भाई श्रेया, आप थोड़ा सा गौर करिएगा। कोई हैज एनीवन जॉइंड? आई थिंक समवन हैज जॉइंड। या तनिष्क ज्वाइन हो चुका है। चलो भाई, तो क्या मतलब तनिष्क वो सुन सकते हैं अभी? या देख के, हाँ हाँ। हाँ, सुन रहे भाई। एवरीवन इज एवरीवन एबल टू हियर तनिष्क? फर्स्ट ऑफ ऑल तनिष्क या प्लीज बोलिए। नहीं नहीं, वेट वेट, आई गेस दे वोंट बी एबल टू हियर इट, यू विल हैव टू वो आपको शेयर द करके स्क्रीन आया, फर्स्ट। मैं खुद या सुन सकता हूँ, सेकंड तुझे। मैं भी यार अपना अपना एलॉन मस्क बन रहा था मैं खुद। रुकिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन, एक सेकंड भैया, दीजिए। लेट मी इंट्रोड्यूस तनिष, एक्चुअली तनिष मेरा ही फ्रेंड है। ओ एंड नाइस नाइस मैंने आपने मुझे टैग किया था, सो आई गेस वो उसके थ्रू आया है। एंड ही इज नाइस। अ यूनाइटेड फैन, सो या। ओ नाइस। ओ आई एम सॉरी, आई गेस जो तनिष दूसरे चैट में अच्छा, है दो तनिष्क वो, ओके, दो यहाँ दो पर तनिष है। तनिष्क हमको आदत हो गई अभी। बाय द वे, सब लोग आई होप दे आर एबल टू हियर नाउ, आर दे? इफ पीपल सो कैन सॉरी कंफर्म। तनिष, एक्चुअली। नहीं, तनिष्क, तनिष्क प्लीज गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। वेलकम टू द स्ट्रीम। ओ नाइस नाइस यार, डॉटमंड तो भाई अभी चैंपियंस लीग भिड़ंत जो होने वाली है, पहली आ गए भी तनिष्क बात करने के लिए। नाइस 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 टू आर यू नो। स्कैर्ड ऑफ अस? ट्रू। ओके, सो इंटरेस्टिंग। तो भाई डॉटमंड तो हम आएंगे उस पर एब्सोल्युटली। बाय द वे, कैमी भाई इन द चैट, भाई कैमी भाई आप फ्री है तो मुझे मैसेज करिए प्लीज, इट बी ग्रेट टू हैव यू। ऑफ कोर्स अ चेल्सी अल्ट्रा, पीपल हु डोंट नो बाय एनी चांस, भाई डू मैसेज मी इफ इन केस यू आर फ्री, आई विल सेंड यू द लिंक। लेकिन आप डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल ऑन डिस्कॉर्ड। मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक भी डाला है, पिन करके रखा है। बट तनिष्क, एज अ न्यूट्रल, मतलब आप जैसे देख रहे हो, आई एम अस्यूमिंग तनिष्क आप प्रीमियर लीग भी काफी देखते हो। अच्छा, एक सेकंड, नहीं तनिष्क की वॉइस नहीं आ रही यार। ओके, मे बी आपको डिस्कॉर्ड का टैब को ओपन रखना पड़ेगा। एक नो नो सेकंड, नो, नहीं नहीं, नहीं, आई लोगों तनिष्क को आवाज नहीं आ रही एक्चुअली, थी। लेट मी सी। या तो भाई there's अभी a technical एवरीवन इन द glitch. चैट, आर यू एबल टू हियर नाउ? तनिष्क, इफ यू कैन जस्ट स्पीक, स्पीकिंग एंड टेल प्रीमियर लीग में आप कौन सा फॉलो करते हो तनिष्क? हम्म हम्म। ओके ओके, बाय वे तनिष्क, सॉरी बट आई बिलीव कि अभी तक पीपल आर नॉट एबल टू हियर। ओके, नो वी कांट हियर अंकित भाई, मे बी बिकॉज ऑफ योर ईयरफोन बोल रहे पुदिन। लास्ट टाइम क्या नो, किया था हम लोग? मैं भी चेक करके आया, आई थिंक नाउ इट इज ऑडिबल, मैं सुन के आया। Okay, people, can you reconfirm? Tanish, please, yeah. So Tanish, you are saying that you are following recently more Premier League because of obviously channels के वजह से, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपका आपका टॉप 4 प्रेडिक्शन क्या है? ओके, मैन सिटी बोल रहे तनिष्क, ओके।
इंटरेस्टिंग। सो फोर्थ न्यूकासल जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक लोग को सुनाई नहीं दे रहा है श्रेय यार, सब लोग बोल रहे हैं कैन नॉट हियर। तो आई डोंट नो इफ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर। जस्ट अ मिनट। क्या आप वापस शेयर कर सकते हैं डिस्कनेक्ट करके? वापस कर रहे थे, एक बार करते हैं, एक बार वापस ट्राई कर रहे हैं, एक बार रुकिए तनिष्क, आप बने रहना। तो लेट मी जस्ट ट्राई एंड शेयर दिस, लेट मी जस्ट ओपन भाई। मे बी टेक्निकलिटीज ट्राई होती टू है। शेयर द क्रोम टैब, एक सेकंड। डिस्कॉर्ड का क्रोम टैब। लास्ट टाइम जो किया था वही करता हूँ ना, लेट मी जस्ट पुट इट इन द या लास्ट सेम। टाइम जो किया था वही। लेट मी जस्ट ट्राई डू दैट, एक सेकंड दीजिए मुझे, आई एम जस्ट ट्राइंग इट। या आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट पहले, लेकिन आप लोग को जानते जानते हैं आई वाज एक्चुअली ऑन अनदर स्ट्रीम, सो वी डिडंट टेस्ट इट मोर, बट एनीवे। या तो एक सेकंड दीजिए मुझे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। हाँ, अभी शायद होपफुली हो जाए। या शुड आई गो टू द चैनल इटसेल्फ माई सेल्फ? ओके। क्या? शुड आई गो टू चिल माई सेल्फ? नो नो, यू आर इन द चिल। आप हाँ, लेकिन मतलब तनिष। स्क्रीन पर मैं जो दिखा रहा हूँ इट्स ओके नो? यस यस। ओके ओके, तनिष्क, श्योर श्योर श्योर। सो Yeah, तनिष्क, ट्रांसफर्स में बात करोगे तो क्या क्या बोल रहे हो यार इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स? मतलब व्हाट ट्रांसफर हैज रियली शॉक्ड यू, व्हाट ट्रांसफर यू लुकिंग फॉर टू स्टिल मुकुकु? वेयर डू यू, क्या कहाँ देखते हो, व्हिच इज अ गुड क्लब फॉर मुकुकु बीइंग अ डॉर्टमुंड फैन? that kid is greedy, man. He is only 17, and demanding approx a 10 million a year contract from Dortmund. So I think he'll leave. Sebastian Keller, sporting director, said that we'll part the ways if we can't get to the conclusion. So it's better that we get rid of him. I don't think we need him anymore. We got Haller. नहीं, फेयर इनफ। और इन टर्म्स ऑफ मुड्रिक, वेयर आर यू? Mudryk, overpaid नहीं है क्या थोड़ा? ओवरपेड है, मतलब मैं Overpaid. ऐसे नहीं, देखो पैसों में तो एवरीवन, आई थिंक कोई भी दुनिया में नहीं होगा जो बोलेगा या कि ओवरपे नहीं किया हमने, 100% ओवरपे किया है। बट मेरा नहीं, ये क्वेश्चन है कि आर यू सीइंग, मतलब इज ही द डिफरेंस मेकर इन चेल्सी, जो आपने देखा होगा इन चैंपियंस लीग फॉर एग्जांपल? I don't think so क्योंकि मैं उसके स्टैट्स पढ़ रहा था, शायद से 6 गोल्स हैं पूरे पिछले शायद सीजन में, और ही इज अ विंगर इन हाँ अ बट यूक्रेनियन लीग, दैट टू. I don't think he'd be a difference maker in that squad. ओके, He सो can't यू, be any better than Pure. I don't think so. बट एक एग्जैक्टली। पॉइंट ऐसा है कि अगर आर्सेनल 80 प्लस 20 मिलियन में लेती तो कोई कोच ओवरपेड नहीं बोलते, बट चेल्सी ले रही है एंड इतना सारे स्पेंडिंग कर रही है, सो उन पे ज्यादा ब्लेम डाल रहे हैं कि आप ओवरपे कर And रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। चेल्सी तो एंथनी गॉर्डन के लिए भी 50 मिलियन देने वाली थी. कोई नहीं, मतलब वो तो मना मना कर दिया फाइनली, वी हैव सेड नो दैट एंथनी गॉर्डन वी आर नॉट नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। लेकिन यार मैं क्विकली बिफोर आई गो बैक टू तनिष्क एंड श्रेय भाई, मिकाइल थैंक फॉर जॉइनिंग यार। भाई मिकाइल, हमने आधी घंटा से लाइव किया भाई, काफी हमने बोल दिया है, लेकिन एनीवे क्विक रिकैप दूंगा। मिकाइल अपने ऑलरेडी कोच है तो वाइड आउट फॉर हिम ऑफ कोर्स। देखिए, क्विक चीज है कि जियेश माइट बी लिविंग टू न्यूकासल एज थिंग्स स्टैंड। बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग मडुएके, तो अगर मडुएके का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, राइट नाउ वी आर लाइक 7 to 8 million ऑफ दैट मार्क। मडुएके इज अ 20-21 year old, सो व्हाट विल हैपन इज हम मडुएके को, नोनी मडुएके जो विंगर है, वी विल बी एबल टू रजिस्टर हिम, और रादर रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहां पर जीएश का एक स्लॉट फ्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच वी कैन गेट अ मिडफील्डर इन विच कैन बी कसेडो। सो दैट इज द जीएश के न्यूज। लिए जीएश के लिए और एक कितनी अभी प्राइस, जीएश की प्राइस कितनी बता रहे हैं एस्टिमेटेड? हाँ, प्राइस तो मतलब आई डोंट थिंक इट्स अबाउट प्राइस एनी मोर यार विद टॉड बॉली। वो तो कुछ भी, इट्स अबाउट फिटमेंट, अबाउट पॉटर और नॉट फिटमेंट, मेरे ख्याल से वही है। लेकिन देखते हैं भाई, एक सेकंड, हम कैमी में जुड़े थे लेकिन वापस डिस्कनेक्ट हो गए, आई थिंक मे बी इज जस्ट जॉइनिंग अगेन, बट वी डोंट हैव अ राइट बैक साइनिंग इट जस्ट वाइला, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर मिकाइल एज वेल। यस, आज भी काफी लिंक्स आए थे। आई थिंक वी हैव बीन लिंक्ड विद डेंजल डमफ्रीज। वहां वापस से टॉक अबाउट डॉटमंड फैन इन द हाउस, भाई हमने वापस से इंक्वायर किया अबाउट फ्रिम्पोंग। और प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, व्हेन इट कम्स टू फ्रिम्पोंग, व्हेन इट कम्स टू जुरानोविच, व्हेन इट कम्स टू डेंजल डमफ्रीज,
हम लोग लिंक हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये लोग जो है ना, दे आर assuming और they are wanting एक assurance कि मुझे इतना first team football मिलने वाला है, and that with Reece James coming back to fitness in 2 weeks time as per the details, मुझे नहीं लगता होने वाला. पेड्रो पोरो टू स्पर्स हो रहा है, दैट इज गोइंग टू हैपन एज थिंग्स स्टैंड. तो रियलिस्टिकली while I don't agree with it, just while and everyone in chat, मैं वही बोलते आ रहा हूँ एक हफ्ते से, Chelsea fans, the fact is now that पॉटर मान गए हैं कि चालोबा आपके राइट बैक ऑप्शन है एटलीस्ट. आई नो पहले वो ऑप्शन में भी कतरा रहे थे, अभी ऑप्शन मान गए हैं, वो दिख रहा है पिच पर. तो आई अभी थिंक तो और बस 2 ही गेम्स हुए, बट एज ए नहीं, लेकिन चालोबा देखो एस्पिलिकुएटा के आगे खेला है चालोबा को लास्ट मैच में. तो आई फील दैट ही इज इज एन ऑप्शन, एंड दैट इज व्हाई मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है दैट because we don't have any more slots left, unless we get someone who's under 21, get back Dujon Sterling or someone, मुझे नहीं लगता we'll be signing a right back, because it is difficult to sell 2 or 3 people within a span of just 2 weeks. मुझे नहीं लगता we'll get rid of both Gallagher and Loftus-Cheek, because हमें midfielders भी चाहिए. We have less midfielders in the house right now. तो मैं दिखाऊंगा स्क्वाड भी आपको. तो a lot of reasons because of that. और स्ट्राइकर हमें अभी भी चाहिए, because Aubameyang is not killing it. So for me, might be that Ziyech should be sold, and because of which क्या होगा, एक स्पॉट फ्री हो जाएगा, वो स्पॉट ले लेगा फॉर एग्जांपल Vlahovic. Ruben Loftus-Cheek might be sold, एक और स्पॉट खाली हो जाएगा, वो ले लेगा मे बी Caicedo. That is what more realistic लग रहा है. And right back, unfortunately, I think we may not come. By the way, Harjas, welcome back to the family, bro. Nice to see you. Bhai, again, before going to Shrey and of course यहाँ पर है अपने तनिष्क भाई, कोई और ज्वाइन किया है क्या डिस्कॉर्ड में? कोई नहीं ज्वाइन किया अभी, सुन रहा है ना? अभिषेक. ओके, अभिषेक इज वेटिंग. भाई अभिषेक इन द हाउस. अभिषेक, हाउ आर यू ब्रो? लॉन्ग टाइम नो सी. व्हाट्स अप? हेलो अंकित भैया. अरे क्या हाल है भाई? आपने आप कौन से अभिषेक हो? अभिषेक स्वाइन हो क्या? जी जी जी. अरे भाई, नाइस टू हियर यू यार. अभिषेक हैज बीन मेंबर ऑफ ऑलमाइटी फैन फॉर अ लॉन्ग टाइम यार, मतलब ऑफ कोर्स ऑलवेज सपोर्टिंग द चैनल. अभिषेक, अभी भी आप शायद जॉर्जिया में हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या राइट नाउ आई एम इन जॉर्जिया. तो भाई क्वारत्स्खालिया से मिलकर, तो उसके फैमिली से मिलकर थोड़ा बात करिए यार अपने लिए. बिल्कुल बिल्कुल करेंगे. अभी तो मुद्रिक भी आ गया, तो बस स्टार क्वालिटी आ रहे, बट आई नो वी डोंट नीड इट. बट एनीवे, अभिषेक, ओवर टू यू. भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. ऑफ कोर्स अभिषेक इज अ चेल्सी अल्ट्रा हिमसेल्फ. भाई अभिषेक, व्हाट आर योर थॉट्स यार? काफी हमारी बात हो रही है चैट पे, लेकिन पहली बार अभी हो रही है, तो प्लीज लेट मी नो अबाउट कीप सेल लोन वाला चीज, और प्लस ट्रांसफर्स में क्या चल रहा है. व्हाट इज योर थॉट्स? First of all, I have been a Chelsea fan for over a decade. Nice. And between 2014 to 2003, I haven't missed a single game of Chelsea. Brilliant. But अभी जिस तरह से चल रहा है, I had to skip the City Chelsea one, because we are literally playing very bad football, and we are at our lowest right now. But the owners are supporting us with the signings, right? But still we are not covering the position we should cover, like all the panel mates have mentioned, the midfield and the right backs. Right. Other than that, we are buying wingers for 100 million, and that makes no sense. But still, he is a young prospect. We should believe in him. And and to add to that, we should offload some other players as well, such as Ziyech, because he had a very good World Cup. So we should try to sell him. I don't want, मतलब मेरे को चाहिए तो नहीं कि वो जाए, क्योंकि he is the only one creating for us. Other than that, बाकी सब तो injured है, और जो fit भी है वो अच्छे नहीं खेल रहे. So get like cash in Ziyech, and yeah, that's it. And others such as Gallagher and all, they are good squad players, but still not good enough for the first 11. So basically, you are saying here Ziyech
It's best जैसे जस्ट वाला भी बोल रहे दैट it's best to kind of let go Ziyech क्योंकि अभी फ्रेश आया वर्ल्ड कप से Yeah. वैल्यू हाई ऑफ कोर्स वापस से वैल्यू लो हो जाएगा प्लस वो बंदा मतलब मोटिवेशन भी क्वेश्चन है मतलब हम हमेशा बात करते हैं अबाउट Ziyech हैवर्ट्स अगर काइंड ऑफ पीपल जो वही है 90 मिनट्स के लिए 100% नहीं देते वो लग रहा है कहीं ना कहीं तो आई थिंक यू आर गोइंग विद दैट लेकिन Yeah. गैलेगर आई एम सरप्राइज यार क्योंकि आई नो क्वालिटी में इशू है बट डोंट यू थिंक हमें I don't know. और चाहिए एट द एंड ऑफ द डे राइट बिकॉज आपको याद है मतलब यू विल रिमेंबर मोर देन एनीवन मतलब even back in the day I remember a Scott Parker had played a role in Chelsea यार in mid 2000s आपको याद है तो भाई काफी Yes. you need such kind of players नहीं in the squad पता नहीं क्या स्कैम किया क्रिस्टल पैलेस ने बट ये गैलेगर वो नहीं है एक्चुअली. ये वो गैलेगर नहीं है, ये कोई दूसरा गैलेगर है. बेसिकली खाली 2 मैचेस क्रिस्टल पैलेस के साथ अच्छा खेला एंड क्रिस्टल पैलेस में अच्छा खेला Yes. that's what you're trying to say जी. okay Yes. I बट hear you. एक्चुअली उसको वो फ्रीडम नहीं मिल रहा मिडफील्ड में जस्ट एज Mason उसको Mount. मिलता था पर बट ही नीड्स टू अडेप्ट द रोल बट काफी मिसप्लेस पासेस करता है, रन्स अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन समटाइम. I hear you वही इसको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा. बिग अप टू मुजाहिद जो ज्वाइन कर रहे हैं भाई एब्सोल्युटली थैंक्स और तो बेसिकली ये तो हो गया चेल्सी का एंड टॉप 4 क्या बोल रहे हो अभिषेक आपकी टॉप 4 क्या है एज थिंग्स स्टैंड मुझे तो ये सीजन अभी एंड चाहिए. आई कांट वॉच चेल्सी एनीमोर. So, बहुत ही are you going to be बहुत content with top 6 or पूरा- you don't want Europe at all? क्या आप कौन से बोर्ड पर हो? I will go with the 15-16 season. I will stay out of the अच्छा. Europe and let the players know that कि आपने जो परफॉर्म किया वही हमारा पोजीशन है टेबल पे. बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमको फुलहम के ऊपर होना चाहिए, ना ही हमको ब्राइटन के ऊपर होना चाहिए, ना ही न्यूकासल पे. एंड आई थिंक फैन और द न्यूट्रल्स वुड एग्री विद दैट. हम बिल्कुल भी अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं खेल रहे और टॉप 6 का तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे, लेट अलोन टॉप 4. Yep. Okay, so again भाई सब लोग pinned comment है. Do check it out. It's the Discord link to join if anyone wants to join and express their मतलब maybe happiness or sadness or anger जो भी हो whatever it is जो भड़ास निकाली भाई निकालिए और चैनल पर भी आपको Frustration. बोलना है भाई you are more than welcome. Yes. कमेंट मतलब एनीवन अभिषेक श्रेय और तनिष्क एनीवन कमेंट ऑन दिस जो आपको पता नहीं दिख रहा है पुदिन का अगर ओबामयांग डी रजिस्टर करते हैं हम सेल तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज बारसा विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर हिम अगर हम डी रजिस्टर करते हैं ओबामयांग को फॉर वॉट एवर रीजन मतलब जस्ट हाइपोथेटिकली बोलते हैं मतलब बिकॉज ऑफ मे बी वो नहीं खेल रहे पॉटर के लिए मे बी जस्ट मे बी Ziyech और आरएलसी को सेल करते हैं वी कैन गेट Caicedo Vlahovic और होप की रीस जेम्स बिकम्स फिट. I think that's not a bad idea, honestly speaking. But where are you on this? Anyone in the panel? Will I Vlahovic think- come to Chelsea? No. Good question. Why not? I Why don't think so. They are in the title race with Napoli, so हाँ Yeah. लेकिन and लास्ट they will play चल Europe. रहा है यार अभिषेक हाँ वो तो 5-1 ना शायद. हाँ 5-1. अभिषेक follows a lot of Serie A, I know that. अभिषेक क्या बोलते हो व्लाहोविच फिट नहीं फिट टाइटल रेस आपने कैसे मेंशन किया मुझे समझ भी नहीं. हाँ नहीं लग रही यार यूवेंटस लग रही थी 8 मैचेस नॉन स्टॉप लेकिन अभी जिस तरह से नापोली ने ढो डाला यार मतलब वो क्लियर है वो पिछले मैच से नहीं लग रहा बट पहले तो 8 हाँ डायरेक्ट विंस तो नहीं लेकिन उसमें भी यार तनिष्क वही मैं ऐड करूंगा उस 8 मैचेस में भी आई डोंट थिंक व्लाहोविच का मेन कंट्रीब्यूशन था. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अभिषेक. हाँ बिल्कुल करेक्ट तो फॉर मी मिलिच इज डूइंग मोर देन व्लाहोविच. जैसे फॉर एग्जांपल आई नो मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन श्रेय वुड ऐड दैट भाई लुकाकू से ज्यादा भाई एडिन जेको कर रहा है इंटर मिलान में वैसे ही यूवेंटस में सीन है कहीं ना कहीं. तो मुझे लगता है व्लाहोविच नॉट बीइंग इटालियन और यूवेंटस का जो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है there is a possibility that Todd Boehly goes for him again. Maybe it's on loan जैसे I think एक comment आया था. It might be one of those options also. लेकिन अगेन उसके लिए हमें करना पड़ेगा या तो ओबामयांग को टाटा बाय बाय ऑलरेडी जो हमने किया था मलूडा को बैक इन द डे इफ यू रिमेंबर अंडर बेनिटेस हमने बोला था भाई गो ट्रेन विद द रिजर्व्स बट अगेन वो एक ऑप्शन है पुदिन का. आई डोंट नो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं इन द चैट. लेट मी जस्ट टेक अ लुक क्विकली. बाकी Shrey, has anyone else joined on the panel? Yes, I guess his name is
गौरव गौरव ज्वाइन किया क्या भाई? गौरव वेलकम टू द स्ट्रीम यार, क्या हाल है? गौरव, are you there? If you can be a little bit louder. गौरव का शायद ऑडियो इश्यूज है. आई थिंक देयर ऑडियो इश्यूज, राइट? गौरव को म्यूट नहीं किया Yeah. ना अपने लोग? No, I haven't. Not इवन yet, मी at least. इधर. गौरव, इफ यू कैन जस्ट एक काम करो गौरव, आप वापस से डिस्कनेक्ट करो के वापस से कनेक्ट करो, मे बी इट विल हेल्प. इज एनीवन एल्स देयर? You can check the input settings in audio. No, नहीं, not. गौरव को अभी I'm talking about Gaurav. फुल वॉल्यूम पे है, फुल वॉल्यूम पे है. No. I'm talking to Gaurav. आई थिंक ओके, हाँ गौरव आप चेक करके. पता नहीं, अभी भी नहीं सुन रहा है. हरजस, आई कैन सी हरजस देयर. हरजस ज्वाइन किया, राइट? Yeah. हरजस, क्या हाल है यार भाई? नाइस टू सी यू. Yeah, nice to see you too. तो फर्स्टली प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So I've been following Manchester United for past 4-5 years. नाइस. Unfortunately, I have been following Manchester United when they have a big downfall. So इतना अच्छा नहीं गया. देन बट राइट नाउ, अच्छा चलो मैनचेस्टर यूनाइटेड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मतलब आर यू इन द बोर्ड जहां पर बोल रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर बैक रियली? क्योंकि अंडर ओले भी आप अगर सच में बोलो तो यार, ओले के अंदर देयर वर अ फ्यू मैचेस जहां पर इमोशंस वर रियली हाई और कमबैक्स हुए थे काफी. बट क्या आप बोलोगे नहीं, एरिक टेन हाग के अंदर यू आर लुकिंग मच मोर स्टेबल, एक प्लान लग रहा है, एक आइडेंटिटी बेटर लग रही है? मतलब वेयर आर यू ऑन दिस? आर यू ऑन द एरिक टेन हाग ट्रेन ऑलरेडी? Of course, एक plan लग रहा है, but it's something like कि हम top 4 आए तो हमारे लिए bonus है. Because starting of the season, like 2 रिजल्ट के पहले भी हमारा इतना खराब गया था. I was not even expecting कि हम top 6 आएंगे. तो top 4 आना, it's a big bonus for us. Title race तो बिल्कुल नहीं, like title race, हम सिर्फ consider और it's a big thing. So, Yeah. and all के time में it was bit different क्योंकि उस time it was more about emotions. कि, we have a legend who came to a club and things are changing. So, Got it. yeah. तो मतलब you are definitely on the train, but not as much, basically speaking. And NS Sports TV in the house. Nipun, do let me know if you want to join here. I've linked basically, of course, the Nipun you can join, and I think Nipun ko let me actually send the link to Nipun separately. I think Nipun is a content creator himself. Let me actually get him on the panel itself. Nipun, I have anyway also. If I don't know Nipun, if you're on Discord, just give me 1 second, Harjas. I'm just trying to send a link to Nipun, because he's an almighty goat. And plus Nipun, by the way, big up to Nipun यार, जिसका कमेंट मैंने हाईलाइट किया था अभी. Nipun actually got a pick with the JT John Terry. तो मतलब Nipun, मतलब I don't know, Nipun was feeling where enough I've had enough of life, वो वाला चीज. मतलब big up Nipun. मैंने आपको DM किया on Twitter. If you can join, it'll be brilliant. But yeah, continuing with Harjas. So Harjas, what is it that Manchester United need for you टाइटल रेस में होने के लिए? Time. One more season, time चाहिए. We need more signings and time. Like if you see Arsenal, they have a system. They like their midfield is sorted. They have a proper striker, and they have proper players in every position. We are technically playing few players out of position. Luke Shaw is not a center back. Yes, he's doing the job, but for how long? Yeah. And same goes for a lot of players. I think Fred, for 1-2 matches, he's really good. But like if you're playing someone like Barcelona and हम Fred को खिलाएंगे सिर्फ Fred, not Eriksen, I think we'll struggle. Got it. I hear you absolutely. I'll just take a couple of comments. Manchester United के लिए आए हैं. मुजाहिद बोल रहे टेन हाग इज नो नॉनसेंस एंड ब्रेव मैनेजर. जिस तरह से उसने सैंचो एंड रोनाल्डो सागा हैंडल किया, आई डोंट थिंक ओले वाज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एज टेन हाग. आई थिंक आई हियर यू एंड आई एग्री विद यू 100%. कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स मोर लाइक अ डच कल्चर आल्सो,
और that is why in the past वो it can go the bad way also. आप अगर lose करते हो a good set of players, then you lose the dressing room. But यहाँ पर बहुत ही carefully टेनाग ने लिया है, because he was very careful in wording जो भी किया उन्होंने जब भी हुआ ना. अनमोल बोल रहे हैं 2 strong CDMs and nice attacking threat in form of Bruno Fernandez and Rashford as finisher. Defense we have Varane, Malacia and others. So basically Anmoldeep, but that is what I think. Casemiro is great, but Casemiro, Eriksen के बाद में Fred, I know he did well in the last match, लेकिन वही है, will you be able to say that it's enough? I think eventually आप लाओगे एक और midfielder, that's what I'm guessing, right, Harjas? Yes, of course. ओके भाई मैडिसन क्यों नहीं खरीद रहा है? सजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. श्रेय, एनीवन इन द पैनल भाई बोलिए भाई. मैडिसन, लेस्टर आर इन डाउन इन द डंप्स, और आई नो मैडिसन काफी इंजर्ड रहे लास्ट 6 महीनों में, बट व्हेन इन फॉर्म ही इज ग्रेट, बट ही इज मोर ऑफ अ नंबर 10. नहीं तो नंबर 10 आई थिंक बहुत कम क्लब्स खेलते हैं आज के दिन में, ज्यादा हेवी मेटल प्रेफर किया जाता है. इज दैट द रीजन यू थिंक? एनीवन इन द पैनल? I think Madison is a very good player for Newcastle. Like, वो top 4 not really, but for someone like Newcastle उनको potentially top 4 आना है. I think he's a great player. Okay, that's a good point, absolutely. And again, NS Sports TV Nipun, I have sent you the link on Twitter DM if you can check it. Football.comment भाई, आप बोलो जैन, आप आना चाहते हो तो बोल दीजिए, मैं आपको भी लिंक भेज देता हूँ. By the way, everyone, भाई again I would request यहाँ पर mods please voice ज़्यादा करिए यार, मैं इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी नहीं कर पाऊंगा भाई. एवरीवन इन द मॉड, जो भी है मॉड्स मेंबर्स, इफ यू कैन वांट यू कैन ज्वाइन, आपके डिस्कॉर्ड में आप ज्वाइन कर सकते हो. पिंड है, द लिंक इज पिंड. दिस इज अ स्ट्रीम जहां पर मैंने शुरुआत में श्रेय से बात की, हमने बात की मोर द चेल्सी पर्सपेक्टिव, लेकिन यहाँ पर हम सुन रहे हैं आप लोग से एज फैंस, व्हाट आर यू सैटिस्फाइड विद योर क्लब, व्हाट आर यू नॉट, व्हाट ट्रांसफर्स आप देख रहे हो, प्लस टॉप 4 की आप क्या देख रहे हो फाइट, वो हम सुनने चाह रहे हैं. सो होपफुली वी कैन ज्वाइन, विल बी ब्रिलियंट. एंड यस, साथ साथ में लाइक डेफिनेटली कर देना स्ट्रीम को, एब्सोल्युटली. आई हैव मैड रेस्पेक्ट फॉर टेनाग, नॉट जस्ट वाइल आप बोल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर लुकिंग एट पॉटर, एडी हाउ टू. ओके, मैकएलिस्टर का क्या सीन है? मतलब मैकएलिस्टर जहां तक मैं जानता हूँ, डिजर्बी और ब्राइटन ने बोला है मैकएलिस्टर अभी रिसेंटली आई थिंक ही गॉट अ रिन्यूअल जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप, और बहुत अच्छा चीज किया है ब्राइटन ने. तो आई डोंट थिंक right now it's going to basically work for him to be moving, क्योंकि यार अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, तो आई थिंक समर में he'll be a good move. That's what I'm assuming. नहीं, I don't know, मतलब मैकएलिस्टर कौन सा भाई? आई थिंक he'll probably fit in Liverpool यार, क्या बोलते हो श्रेय? Yeah, surely. Like बट I वही है haven't seen. लिवरपूल अभी यार, आई थिंक they'll probably अभी रिलाई कर रहे थियागो पर, तो विल मैकएलिस्टर भी ओके नॉट स्टार्टिंग? मुझे नहीं लगता. आई थिंक ही इज नॉट अ, मतलब ही इज नॉट अ डीएम ना, ही इज मोर लाइक अ नंबर 8. तो आप यू स्टिल प्ले विद थियागो, आई फील. कोई नहीं Let's भाई, see, यहाँ अभी पर लिवरपूल की इतनी डेप्थ भी नहीं है कि, एंड लाइक इंजरी इश्यूज होते रहते हैं, सो मे बी दैट माइट बी द राइट मूव फॉर लिवरपूल, बट लेट्स सी. ओके, डॉर्टमंड भी लिंक हुआ था मैकएलिस्टर से, तो यदि जूड बेलिंगम जाता है तो सोर्सेस कह रहे थे कि शायद से जूड का रिप्लेसमेंट हो सकता है मैकएलिस्टर. ओके, हाँ वो भी हो सकता है, जूड का रिप्लेसमेंट हो सकता है, दैट्स अ क्वाइट पॉसिबिलिटी यार. अगेन डॉर्टमंड फैन भाई, लेकिन जूड का आप बोल दो यार, कहाँ देखते हो? मतलब एज अ डॉर्टमंड फैन व्हाट वुड यू से इज द बेस्ट फॉर जूड? तो स्टे एट डॉर्टमंड. वो ऑप्शन नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आंसर दे दिया भाई. भाई तनिष को नहीं जॉइन द चैट एवरीवन. भाई तनिष देखो भाई, बहुत ही शायर बन गए तनिष. 99% फेथ, 1% चांस. नहीं लेकिन से चलो डॉर्टमंड डेफिनेटली ऑन, अगर बोले तो ठीक है, लेकिन अभी डॉर्टमंड इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. तब कहाँ देख रहे हो? बिकॉज आई बिलीव अभी भी 4 क्लब जा रही है टेक्निकली स्पीकिंग. आई थिंक रियल मैड्रिड, लिवरपूल, चेल्सी और शायद एक और क्लब है. 4 क्लब्स इंटरेस्टेड है बेलिंगम में. हम तो चेल्सी बोलेंगे, मैं और श्रेय तो, लेकिन फिटमेंट के हिसाब से, बिकॉज तनिष ने देखा है ना डॉर्टमंड में, मतलब डॉर्टमंड इतना नहीं जितना तनिष दिखते हैं. I think he'll eventually go to Real Madrid or Liverpool. I actually see that as well. Real Madrid seems more, मतलब लिवरपूल की ऐसे पॉसिबिलिटी है क्योंकि इंग्लिश कनेक्शन भी है. he eventually want to go home sometime, so
और ब्रांड ऑफ प्ले भी, क्योंकि गेगन प्रेसिंग वही जर्गन क्लॉप डॉर्टमंड में भी था, वही फुटबॉल वहां पे भी खिला रहा था। तो आई थिंक he'll fit better at Liverpool, but career wise he should go to Real Madrid, that's for sure. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, कोई नहीं। मेसी को सिटी भेज दो, पीएसजी ने खराब कर रहा है भाई। वो तो द ट्रेनर ऑलरेडी लेफ्ट यार, आई डोंट थिंक वो होने वाला है वापस। वो एक चीज थी, मतलब याद है जब चेल्सी और सिटी दोनों ट्राई करी थी, आई थिंक इट वाज ईयर बिफोर लास्ट, इट वाज क्रेजी ब्रो, लेकिन कोई नहीं। विक्टर ऑसिमेन नापोली छोड़ देगा समर, व्हाट विल बी हिज डेस्टिनेशन? यार यहाँ पर आई थिंक मुजाहिद आज अगेन देयर न्यूज, अभी तो खैर कहीं नहीं जा रहा, लेकिन समर में देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इन द हाउस, हरजस, क्या लगता है यार? मतलब आई नो आपने लाया अभी के लिए, यू हैव वेगोर्स्ट, लेकिन वो एनीवे अभी थोड़े महीनों के लिए, प्लस मार्शियल इज नेवर रिलायबल फॉर एन एंटायर सीजन, मतलब सच में बोलूं तो, राइट हरजस? तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, विक्टर ऑसिमेन या हैरी केन, और कौन लिंक है आपके साथ? मतलब जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, नेक्स्ट समर। The problem is वो price, like not because मैं खरीदने नहीं वाला नहीं, हूँ, सोचो but आपके पास पैसे है, यू नो ग्लेजर्स छोड़ देते हैं और आ जाते हैं नए ओनर, जैसे न्यूज में आ रहा है लास्ट फ्यू आवर्स में, देन who's your preferred option, put it that way? yeah, of course Victor Osimhen ये तो perfect है। और यंग भी देखा है, रहता एंड बट न्यू लीग है, मतलब यू आर सेइंग हैरी केन से यू वुड प्रेफर विक्टर ऑसिमेन बिकॉज ऑफ एज, इज दैट द रीजन? Harry Kane, I don't see him having that winning mentality, like even Okay. England can be supporting उनका manager, what's his name? इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग, काफी आप बोल रहे हो, मतलब और मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, बिकॉज यू ऑल नो हाउ मच इज टॉटनम वन। भाई टॉटनम सब्सक्राइबर, सॉरी यार, वो रियलिटी है, जस्ट फैक्ट बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी इट्स अ फैक्ट। बट मोलिना तो चेल्सी को क्या लगता है भाई? सजन, ये न्यूज मर गई है, तो आगे वापस से बोल रहा हूँ, चेल्सी फैंस, अगर यू आर एक्सपेक्टिंग अ राइट बैक टू कम, आई थिंक मैंने अपने आप को समझा दिया है, वेदर आई एम नॉट हैप्पी और नॉट, इट डजंट मैटर, राइट बैक नहीं आने वाला। आई जेन्युइनली बिलीव दैट। हमारे पास स्लॉट्स ही कम है यार, हमें चाहिए मिडफील्डर मोर देन राइट बैक। आई स्टिल बिलीव, डिस्पाइट मैंने खुद दिखाया था कि यार राइट बैक हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, इन द लॉन्ग रन आई थिंक हमारे पास मिडफील्डर ज्यादा चाहिए। आई जस्ट बिलीव दैट्स मोर इंपॉर्टेंट टू अ स्क्वाड। आई माइट बी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। बट ऑसिमेन इज अ प्रेसिंग स्ट्राइकर व्हिच केन लैक्स। ओके सजन, दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं देख रहा हूँ और कोई ज्वाइन किया क्या भाई? Okay, we have, I think Gaurav was already there, right? Gaurav, Yes. is your volume okay now, Gaurav? If you would like to try and speak. अभी गौरव म्यूट पर है शायद। Yeah. अच्छा, मैं अंकित भैया, आप लोगों से अभी जेरेमी अभी आपने फ्रिंगपोंग म्यूट भी किया। है ना? क्या क्या जेरेमी फ्रिंगपोंग लिंक था ना आप लोगों से? फ्रिम्पोंग लिंक है, वो शुरुआत में स्ट्रीम में वही बोला था ना। देखिए, जेरेमी फ्रिम्पोंग एंड डेंजल डम्फ्रीज एंड थिंग्स लाइक देम, या क्या हुआ है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग टू गेट प्रॉमिस कि इतने मिनट्स हम खेलेंगे। अब प्रॉब्लम है कि चेल्सी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, बिकॉज वी डोंट नो कितने मिनट्स के लिए रीस जेम्स इंजर्ड रहेगा, यू नो, वो रियलिटी है। मुद्रिक को तो भी कहीं ना कहीं, बड़े बड़े सपने दिखा के लेके आए, बट पता नहीं कितना गेम टाइम हाँ, मिलेगा और एक्चुअली में। मतलब इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से, लेकिन हमने एक गलती कर दी, यू कैन से दैट द लेजेंड एस्पिलिक्वेटा को हमने नो बेसिकली एक्सटेंड कर दिया ऑलरेडी इस साल तक। तो Yeah. समवेयर डाउन द लाइन मैनेज भी करना पड़ता है स्क्वाड, इतनी बड़ी स्क्वाड हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट, एंड पॉटर इज नॉट अ मैन मैनेजर रियली स्पीकिंग, जितना मुझे दिख रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता ही इज अ ग्रेट मैन मैनेजर एज थिंग्स स्टैंड। मे बी सब लोगों को खुश करने के चक्कर में ना वो किसी को भी मोटिवेशन नहीं दे रहा है। दैट्स व्हाट आई सी इट, आई डोंट नो। कोई भी चेल्सी पैनल, अभिषेक, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉटर ऑन दैट पर्सपेक्टिव जो मैंने बोला? He is the nicest guy in the Premier League, I would say. आफ्टर Bit too एंगल nice. लगाते He is, after N'Golo Kante. N'Golo Kante इतना अच्छा है कि हम भूल जाते हैं कि वो 1 साल से इंजर्ड है. एंड स्टिल वी डोंट वांट टू He, किक हिम अप। स्टिल हमें yeah, he will आशा है come. कि कॉन्ट्रैक्ट He'll, मिल जाए उसे। yeah, he will come after 1 year. He will play a match. He will smile, and they will go injured again. Just kidding. But he is the legend of the club. But Yeah. we are really missing him. A player Who will like play him in the striker middle. on?
हाँ मतलब देखते हैं यार मतलब व्हाट कैन हैपन बट एनीवे देयर हैज टू बी सम चेंज यहाँ पर बिल्कुल. ओके लेट मी जस्ट सी वन सेकेंड इफ आई हैव एनी मैसेज. ओके यहाँ पर आई थिंक निपुन यस विल बी लाइव ब्रो, विल बी लाइव फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स एब्सोल्युटली वी विल बी विलिंग टू वेट नो प्रॉब्लम. Does Gaurav दीपांजन बोल wants रहे to हैं. speak? एक सेकेंड. हाँ यस यस प्लीज गौरव. Hi. अरे फाइनली गौरव इन द हाउस पीपल. गौरव ओपी. गौरव क्या हाल है? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hey, hi, Ankit bhaiya. Yeah, so हेलो I'm हेलो. currently a fan of Madrid and Man United. So and like I've been following you from quite few months. My current question is like, who will be the permanent striker in Chelsea? Will go back with Aubameyang or someone else? Didier यार Drogba. भाई वेल सेड. मैं इसका वही बताने वाला था. वी हैव टू गेट अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू. मैं तो बोलता हूँ भाई मतलब आई लव्ड हिम एब्सोल्युटली. द ग्रेट लुका वियाली टू यू नो जिमी फ्रॉयड हैसलबैंक टू अ डीडी ड्रॉगबा टू अ हर्नन क्रेस्पो टू अ निकोलस एनेल्का. भाई सब लोग किसी को भी ला दो आज के दिन में भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अरे टू ओबामियांग बेटर करेंगे. मैं झूठ नहीं बोल रहा. That's the way I see it. And Madrid fan पता नहीं यार आप क्या सोचते हो भाई. अबामेयांग क्या लगता है एज अ मैड्रिड फैन गौरव एज समवन जो ला लीगा देखे थे मतलब डोंट यू थिंक दैट अबामेयांग मेंटली नहीं खेल रहे पॉटर के लिए? क्या लग रहा है आपको जितना आपने देखा है अबामेयांग को इन चेल्सी? वापस म्यूट पर चला गया यार कैसे? आई थिंक म्यूटेड हिमसेल्फ. गौरव Yeah, he muted कोई himself. नहीं कोई नहीं. अब ओके एनीवे आई कैन सी आरित्रा इन द चैट. आरित्रा वेलकम यार. भाई साहब आरित्रा आ गया यार. क्या हाल है? Yeah, all good, Uncle. Yeah. थोड़ा सा लाउडली बोलिए आरित्रा. कैसे हो? ऑल गुड. Yes, all good. How's it, मेरा? Nice to hear you. Aritra, obviously again ultra of Almighty Blues यार. मतलब thanks for joining यार हमेशा. Aritra बारसा fan correct? एकदम. हाँ बारित्रा प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए थोड़ा मतलब the way you want to do it प्लीज. ओके. तो मैं अभी मतलब बारसा फैन हूँ लास्ट अराउंड 10 साल से ज्यादा हो गए 2010 से. तो अभी फिलहाल क्या जीत गया एक कप उसको लेके खुश है. देखते कितना दिन खुशी रहता Long wait I know. है. यस अराउंड 625 या फिर 630 डेज ऐसा कुछ 3 बाद का पाया. तो ठीक है चलेगा. अभी क्वार्टर का सेमीफाइनल पे है तो देखते क्या होता है. और बाकी अंकित भैया का चैनल तो है ही सब कुछ अपडेट्स एवरीथिंग के लिए. बिल्कुल भाई आई अप्रिशिएट दैट आरित्रा. लेकिन आरित्रा मैं ओबामेयांग के बारे में बात ही कर रहा था. आरित्रा मेरी बात भी होती है व्हेन आई एम लाइव एंड ही इज इन द चैट काफी. तो भाई आरित्रा ओबामेयांग के बारे में आई नो मैंने खुद बहुत प्रेज किया था. आई वाज हैप्पी एक्साइटेड अबाउट दिस साइनिंग जब चेल्सी ने किया था और मैंने काफी फीडबैक लिया था विद बारसा फैंस. आई नो दैट हमने खुद कवर किया था लास्ट ईयर वॉच अलोंग साथ में हमने देखा था. भाई आरित्रा क्या व्हाट इज रॉन्ग विद ओबामेयांग? व्हाट डू यू थिंक? मेरे को जहां तक लगता है ओबामेयांग का सीन ये हुआ. ओबामेयांग चेल्सी गया था बिकॉज ऑफ अपना टुकेल की वजह से. टुकेल जब चला गया ओबामेयांग इज नॉट अ प्लेयर ऑफ पॉटर. ओबामेयांग का जो पोटेंशियल जावी ने निकाला था जब डॉर्टमंड में जब टुकेल उसको जैसे यूज करता था पॉटर मेरे को जहां तक लगता है उसको यूज नहीं कर पा रहा. और उसका छोड़ ही दीजिए पूरा एकदम लोएस्ट स्टेट में है. तो मतलब ओबामेयांग मतलब क्या मेरे हिसाब से बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लेयर है. कोई मतलब सारा कुछ उसका पोटेंशियल नहीं निकाल पाता है जैसे आर्टेटा भी नहीं निकल पाया था. तो जावी के अराउंड क्या था वो 6 महीने में क्या वो ओबामेयांग एकदम R9 बन गया था. तो बट जो भी है अगर आपको नहीं चल रहा तो हमें दे दो. वैसे भी मेम्फिस जा ही रहा है. हाँ लेकिन अभी आप ले भी नहीं नहीं सकते. कर पाओगे ना एज पर द लेटेस्ट न्यूज. एज पर द लेटेस्ट हाँ वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अपने आप. तो मतलब मैं हाँ. इतना तक बोल रहा हूँ. देखो आप इतना एक्सट्रीम चला गया है यार. द फैक्ट इज वी नीड समवन टू स्कोर द गोल्स. और पॉटर ओबामेयांग यस ही फाइनली वाज इन द स्क्वाड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी लेकिन स्टार्ट नहीं कर रहा अभी भी. ठीक है तो हो सकता है ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू गेट मैच फिट. आई डोंट नो हो सकता है लेकिन एज ए सब्स्टिट्यूट भी वो एफर्ट दिख नहीं रहा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट या वी माइट जस्ट सेंड दाट्रो फोफाना ऑन लोन. बट एनीवे वो यंगस्टर है. आई फील दैट एक जन को हमें डी रजिस्टर करना पड़ेगा अगर हमें चाहिए एक और स्ट्राइकर. या तो हम 2 मिडफील्डर्स को सेल करें जो हम करेंगे नहीं बिकॉज इतने सारे मिडफील्डर्स ऑलरेडी इंजर्ड है और फॉर्म में नहीं है. तो आई थिंक इट विल बी
पॉसिबिलिटी दैट ओबामेयांग को बोला जाए भाई सॉरी थैंक यू वाला चीज बोला जाए, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा, बट आई नो वी आर इन दैट डेस्परेट सिचुएशन क्योंकि हम फिर 10 तो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट के अलग कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ वही जैसे एक विलियन ने किया था विद आर्सेनल, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ। लेकिन चेल्सी को पे करना पड़ेगा उसमें भी, राइट, दैट्स द थिंग, आई डोंट थिंक अब विल बी फेयर यहाँ ओवर बोली के पास पैसा थोड़ी कम है, 100 मिलियन फेंक रहा है। यहाँ पर थैंक्स जस्टवेला फॉर सेइंग दैट, भाई सब लोग यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा था भाई 550 नहीं हुए, 550 इवेंचुअली होंगे, लेकिन सब लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं भाई कहीं ना कहीं हमें डीरेजिस्टर और सेल भी करने हैं नेक्स्ट 14 दिनों में, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी स्क्वाड है। मैंने दिखाया था, मैं साथ साथ में 2 स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम में मैंने दिखाया था, वी हैव अभी आज के दिन में कॉबम में देयर आर 32 प्लेयर्स जो ट्रेन कर रहे हैं या तो हॉस्पिटल में है, मतलब जो समझ जाओ जो इंजर्ड है, बेसिकली कुल मिला के 32 प्लेयर्स है। अब 32 प्लेयर्स के स्क्वाड से नहीं खेल सकते, राइट, यू नीड सम ट्रिमिंग, सो ट्रिमिंग होगा इन द नेक्स्ट 13 डेज, आप देखोगे कुछ ट्रिम होगा, इसलिए हम आउट्स भी बात कर रहे हैं। बट अगेन मैं यहाँ पर ओके, तो वी डोंट हैव एनी न्यू पर्सन इन द डिस्कॉर्ड राइट नाउ। भाई टाइगर बेस थैंक्स फॉर जॉइनिंग, और सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को। जीके बोल रहे हैं या अंकित भाई, वी हैव सीन पॉटर एंड ही हैज बीन यूजिंग मिडफील्ड एफिशिएंटली, नाउ ही डजंट हैव दैट at Chelsea, so will Mudryk and Ziyech will help him. Okay, GK मैंने आपके कमेंट देखे थे पिछले स्ट्रीम्स में भी, so going by that and going by this I understand your question absolutely. Quickly मेरा ओपिनियन मैं दूंगा, मैं यहाँ पर चेल्सी फैंस ऑन द पैनल से भी उनसे डबल चेक करूंगा, लेकिन मुझे लगता है हम बेसिकली कैसे बोलूं, यू आर ट्राइंग टू आस्क यार आपको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले और आप यहाँ पर जज कर रहे हो कि आपको फिजिक्स में कितने मिले, इट्स ऑलमोस्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। what Mudryk does is Mudryk upgrades our final third जो लिटरली हग रही है, मतलब जितना बुरी तरह से हग सकती है ना उतनी बुरी तरह से हग रही है। हम इतने मैचेस में स्कोर ही नहीं किए थे, फाइनली एक मुश्किल से स्कोर किए, वो भी हैवर्ट्स को 3-4 चांस मिलने के बाद। मोड्रिक इज नॉट अ गोल स्कोरर, लेकिन साथ साथ में चांस क्रिएशन भी आप देखो अपने बहुत कम हो रहे, इवन आवर एक्सजी इज वेरी वेरी लेस कंपेयर्ड टू जो हुआ करता था इवन लास्ट सीजन, तो वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो वी हैड टू अपग्रेड दैट इवेंचुअली। अब क्यों मुड्रिक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉड बॉली के पास पैसे है, सेकेंडली वो बंदा एक है हु इज अ क्वालिटी ऑफ इन द ब्रैकेट ऑफ मे बी नॉट एग्जैक्टली लेकिन क्लोज टू अ राफेल लियो, क्लोज टू अ क्वारत्स्केलिया, उस ब्रैकेट में जो टारगेटेड प्लेयर्स थे वर्ल्ड फुटबॉल में उसमें थे, तो और यंग प्लेयर है और बहुत पोटेंशियल है, तो आई थिंक अभी अवेलेबल है, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्वारत्स्केलिया शायद समर में नहीं आएंगे बिकॉज यू माइट गेट रियल मैड्रिड, बार्सिलोना हु माइट गेट सम मनी फ्रॉम समवेयर एंड यू नो फाइट फॉर क्वारत्स्केलिया, जस्ट सेइंग समर में मिलान में रहेंगे राफेल लियो ऐसे लग रहा है, तो दैट इज व्हाई वी वेंट फॉर हिम, क्योंकि वी कैन नॉट वेट टिल समर, हमारे पास टॉप 4 भी नहीं रहेगा फॉर अस टू गेट दैट अट्रैक्शन इन द समर, अभी हमारे पास फिर भी थोड़ा है, तो वी आर गॉन विद मुड्रिक, लेकिन वो तभी मीन करता है अगर हम जिएश मुड्रिक को रखे, अगर हमारे पास मिडफील्ड है जो उनके पास बॉल पहुंचा सके, तो मिडफील्ड हमें साइन करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाई वी जीके लाइक आई सेड 32 प्लेयर्स है, वी हैव टू सेल प्लेयर्स, हमें करना पड़ेगा शायद डी रजिस्टर एक प्लेयर को, या हम ऐसे प्लेयर्स साइन करें जो अंडर 21 है लाइक अ मडुएके जो रजिस्टर नहीं होंगे, मतलब सिंपल एज दैट, जो वी कैन प्ले एनीवे, तो दैट इज अ रीजनिंग जीके सिंपली पुट। लेकिन टाइगर बीस्ट हैज जॉइंड, टाइगर बीस्ट इन द हाउस, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, कैसे हो? टाइगर बीस्ट इज ऑन म्यूट, आई थिंक, लेट मी जस्ट सी, टाइगर बीस्ट इज ऑन म्यूट, टाइगर बीस्ट आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, आपके बॉटम लेफ्ट में आपको बताएगा इफ यू आर म्यूटेड और नॉट, डू लेट मी नो, एक सेकेंड। अच्छा मानव भी है भाई, मानव डेफिनेटली यार, मानव प्लीज गो अहेड यार, क्या हाल है? भैया कैसे चल रहा सब? Nice to hear you again, Manav bhai. Always an ultra of Almighty Blues, of course, Man City ultra as well. और मानव, I know that we have to meet as well, वो भी अपना ड्यू है, बट मानव सब लोग के लिए by any chance for people who missed out the last member stream, मानव is a member, लेकिन मानव please go ahead and introduce yourself यार सब लोग के लिए. Yeah, hi. So I'm a member of the channel for around 6 months now, and I'm a Man City fan in and out. I like Leo Messi a lot as well. So yeah, that's pretty much it from my side. Nice. Obviously मानव अभी दिखा नहीं रहे, लेकिन मानव is pretty pissed off with the offside goal. मानव fresh, I didn't want to remind that, लेकिन मानव as things stand, let's be honest,
मैन सिटी स्टिल हैव it in them यार pretty much to win back to back और आर्सेनल 2 बार खेल रहे हो मानो so how is the confidence right now? I'd be honest here. We have the chance to win the Premier League still, but it's a slim chance now. I mean, this is more of Arsenal's to lose now. As much as quality that we have, 8 points lead is a decent lead. Now, if we can go back to 18-19 season, where Liverpool had a 7 point lead over us in January, and somehow they played a couple of draws and then we defeated them at Etihad. If you remember that Johnstone clearance, that was something around 11 millimeters. I mean, that can happen definitely. And we have that capability to go on a run of, let's say, 13, 14 wins on a trot, like we have done a couple of times now. That can happen. But now, to be very fair, the way Arsenal are playing and the flaws that we have in our system, it's Arsenal's to lose right now, the Premier League title. Exactly. हाँ, by the way, मुजाहिद आप बोल रहे हैं आर्सेनल मैन यूनाइटेड नेक्स्ट है, लेकिन बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज मैनचेस्टर सिटी हैज 2 6 पॉइंटर्स अगेंस्ट आर्सेनल व्हिच इज स्टिल पेंडिंग. तो कहीं ना कहीं इफ दे मतलब इट्स ऑलमोस्ट मानव यू वुड से दैट आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम उससे, राइट? हाँ, बेयर मिनिमम 4 points तो चाहिए ही चाहिए. हाँ, नहीं तो मतलब आई थिंक यू कैन कंसीड अनलेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज द से, करेक्ट? मैं आई गेस एक रीजन, वो बात भी ठीक है, बट एक रीजन ये भी है कि हालैंड ऑफ लिटली, जैसे हम ये देखें, जैसे ब्रेंटफोर्ड गेम थी या लिवरपूल गेम थी, इवन ऐसी गेम एवर्टन वाली, जिसमें टीम्स दैट पैक द बॉक्स वेरी वेल एंड समहाउ वो डे ब्रुयना की जो सप्लाई लाइन है हालैंड को, अगर आप वो कट कर दो तो हालैंड काइंड ऑफ बिकम्स इनइफेक्टिव. आई एम नॉट टर्निंग माय बैक ऑन हालैंड एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसका गोल रिटर्न is, I mean, exponential, and as a City fan, you just cannot doubt that guy. But the issue is that when you switch from playing a false nine system 2 years in a row, and then to playing with a proper striker, that is a different thing. Now, what I see कि जैसे लिवरपूल वाली गेम थी, यूनाइटेड वाली क्रंच गेम, जब दोनों सेंटर बैक्स और सीडीएम ने ट्रिपल डाउन करा हुआ हालैंड पे, तो आप एक अल्वारेज जैसे प्लेयर जो बेंच पे एक ऑप्शन है, उसको ला सकते हो जो फॉल्स नाइन खेले, एक आध सेंटर बैक को अपनी पोजीशन से निकाले, ताकि फोर्डन, बर्नार्डो, महारेज, जो प्लेयर्स हु लाइक टू ड्रिफ्ट इन इनटू द बॉक्स, उनके लिए स्पेस बने, व्हिच इज नॉट बीइंग डन. आई डोंट नो व्हाई. आई मीन, पेप अगर कुछ कर रहे होंगे तो वो सोच के ही करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई इज एन ऑर्डिनरी टैक्टिशियन, इज प्रोबब्ली द बेस्ट ब्रेन इन फुटबॉल. बट आई गेस when you have the resources available, why not go to a plan B? नहीं आई हियर यू. बाय द वे, आप लोग समझ ही गए मानव का जो एक्सप्लेनेशन था, मानव ओपी हो जाए भाई इन एवरी इन द चैट. भाई मानव हैज हेल्प मी आउट अ कपल ऑफ टाइम्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल एनालिसिस. हम जो रिव्यू करते हैं, आई नो रिसेंटली रिव्यूज कम हो गए बिकॉज हम वॉच अलोंग ज्यादा कर दिए, पहले इट यूज्ड टू यूज द अदर वे अराउंड. बट एक सेकंड भाई, शायद आप तब से पूछ रहे हो भाई, 1 घंटे से आप पूछ रहे हो. शायद मच लव टू यू ब्रो, मैंने बार बार ये बोला है, लिंक चैट में है, इनफैक्ट मैंने पिन कर दिया है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है. हमारे 800 वीडियो दोनों चैनल में हमेशा डिस्कॉर्ड लिंक है, लेकिन पिन भी कर दिया है. हाउ टू चैट इन वॉइस, आपको डिस्कॉर्ड पहले अकाउंट चाहिए आपको, और अगर आपके पास अकाउंट है, गो टू दैट लिंक, क्लिक ऑन दैट लिंक, देन गो टू दैट, कौन सा चैनल है हम लोग चिल में बात कर रहे हैं ना, चिल, यस. हाँ, maybe you know what I'll do, I'll probably mention that as well. Should I do that? You The can pinned comment. Maybe I'll do that definitely. लेकिन ना मानव, I'll just put you on hold for a couple of minutes. यहाँ पर I can see couple people waiting यार. First of all, Danish has been waiting. Danish कैसे हो भाई? Manchester United Ultra, I believe. Danish, correct? अंकित भैया, क्या हाल है भाई? Nice to speak to you finally. थैंक यू भैया. क्या हाल है, बोलिए. बस Danish, से- please introduce yourself to everyone first. My name is Danish. I am a MUFC Ultra from the last 11 years. Nice. And following Ankit Bhaiya, I think it has been almost a year I've been following him. Yep. For sure on both the channels. हमारी बहुत होती है बात क्रिकेट फुटबॉल दोनों में. लेकिन दानिश, फर्स्टली यार कंग्रेचुलेशंस टू विन द मैनचेस्टर डर्बी. हम अभी मैनचेस्टर सिटी से फैन मानव से ही सुन रहे थे. आपका क्या राय है? यहाँ पर हरजस भी बोल चुके हैं ऑलरेडी, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. वेयर आर यू ऑन टेरिक टेन हाग? वेयर आर यू ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड?
transfers? मतलब are you definitely overexcited कि आप बोलोगे नहीं नहीं he has to prove it a lot more? मतलब where are you? First of all, the team which we have and the depth, I think we might still slip and even fail to win Carabao or FA Cup. But the progress he has shown, mm, that proves that he has caliber, that he can make the United great again. I will only say one thing, that is too early and we shouldn't overhype the squad, but just support the manager in wins and even in the losses. Okay, fair enough. I hear you absolutely. Well put there, absolutely, Danish. और transfers में क्या देख रहे हो आप? मतलब do you have a preference of the links? Mm, my first preference will be obviously Victor Osimhen. I think it's near to impossible. And second one, Nico Barella from Inter. And third one, Mike Maignan from AC Milan as David De Gea replacement. Fair enough. And my first preference from last 1.5 year was Nkunku, but Chelsea signed him. भाई अभी भी यार you never know. The fact is Shrey is like laughing, I know, but the fact is अगर हम top 4 नहीं पहुंचते, which is quite likely, there are talks going on that Nkunku might just make a U-turn. I don't know if it's possible, but there are, I know, थोड़ा rumors ही हो रहे, but I'm hoping that's not happening because I think officially हमने अनाउंस नहीं किया अभी तक. लेकिन दीपांजन का एक मैसेज है, ब्रिटिश ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये, अबाउट द न्यू ओनरशिप यार. दानिश हरजस भाई, टू मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्ट्राज इन द हाउस, आप लोग बोलिए मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू ओनरशिप? डू यू हैव अ प्रेफरेंस? यू हैव समथिंग इन माइंड? क्योंकि बहुत सारे लिंक्स हुए, ऑफ कोर्स इंडिया से भी हुए, बट व्हाट आर यू लुकिंग? आर यू लाइक ग्लेजर्स आउट व्हाटएवर, Oil या आप money, बोलोगे वेट एंड oil वॉच? money, oil money, Oil only money. oil money, oil money. Oil money is what is preferred. मतलब obviously across Oil down money, there. man. All you need is big money. Big money, exactly, that's required. Money Nipun is in the money. house. Yeah, absolutely. Nipun, big up, yaar. First of all, how have you been, Nipun? Obviously, Nipun, for people who don't know, why he had the pleasure of meeting John Terry just about 48 hours ago. Nipun, lifetime moment. After the Palace game. Absolutely. और मैं शायद दिखा सकता हूँ. I don't know, Nipun, let me just actually show It's for fine. people who It's missed it fine. out. Go for it. Yeah, but Nipun, please share your thoughts, bro. It's been a long time since we discussed Nipun, but where are you on Todd Burley? Like, are you like totally? Well, he's become a mockery to some people, but at the same time, people are like, I wish we had such an owner. Where are you? Look, he's doing exactly what the fans want. I mean, like going into someone's Twitter space like that shows you how much he actually cares. Right, exactly. By the way, people waiting in Discord, be there. I'll come for just a moment. मैं एक second ले share कर रहा हूँ. This is basically what I wanted to share, obviously. And yes, it is not photoshopped. It is actually Nipun there very much with the JT. So Nipun, big up to you for that as well. Of course, representing us and as well as your channel there. Brilliant stuff. But Nipun, quickly on the transfers again. मतलब there's so much talk on Mudryk and of course Joao Felix getting on loan, emergency and stuff like that. We need a midfielder, right back. But are you willing to be patient, or you are like, no, Graham Potter? It's either Graham Potter out or he needed people like crazy. Only that can help Chelsea. Where are you? I know he needs to stay. Graham Potter needs to stay, in my opinion. That's interesting. And I know I'm going to have a lot. I know I'm going to have a lot of content creators on my case for saying that. No, as in I hear you, because अगर कोई आएगा भी तो I don't think they can, you don't get a Tuchel and a Conte every day. Like, I don't think such managers are available anyway, right? Look, So all I'm going to say is it's going to take time. Like Arsenal suffered for 3 years, Man United suffered for a similar amount of time, and now look at where those two clubs are going. I mean, and now it's our turn. Yep. Short-term pain, long-term gain. Right. Yeah. And yes, of course, like, what did JT tell you, or what did you tell to JT? I just asked, can I have a picture? And he says, of course. He's a really nice guy.
Yeah, absolutely. As in the fact that the moment when JT ने खुद यार मेरा एक I think it was JT's birthday and I posted a happy birthday kind of thing and he actually liked that, man. As in for me, people might not relate. I don't know आप लोग relate कर पा रहे हो कि नहीं. For me, like my year was made already. Simply put, that is how it is. Like for people who are like JT and I'm like all the people know who watch me and who know me personally as well. For me, JT and Ian Robin was side. These are two people who inspired me as a football fan over the years. I know, as in obviously Luca, Vialli, Zola, the likes, always, as in they were there. But for me, that the players who took me as a fan to the next level were JT and of course Iron Robin's skills. Actually, to be very honest. But quickly, I'll take a few comments before I go back to the panel again. पॉटर पे आपका क्या स्टैंड है अंकित भाई, इन और आउट? मुजाहिद, आई एम ऑन द जैसे मैंने अगेन मैं ये भी बोलूंगा हर एक हफ्ता चेंज होता है झूठ नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट इज हाउ पॉटर्स टाइम एट चेल्सी हैज बिन. अभी तक आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लाइक आई डोंट बिलीव इन पॉटर. सच में बोलूं तो दैट्स अ ऑनेस्ट ओपिनियन. दैट डजंट मीन दैट पॉटर आउट लाइक राइट नाउ. नो, if I am getting the right man, if the right man gets a proper window, then fine. It doesn't mean agree with me probably Shrey that बीच में अगर किसी को लाए तो क्या ही तो फायदा करेगा, right? That is the only thing that I'm looking. But Potter should do more in matches. That I definitely don't agree with his tactics, उसका body language and all those things. I think बहुत बहुत back foot पे रहता है in my opinion. Shrey, क्या बोलते हो? See, you said कि आप बिलीव नहीं करते पॉटर में. इट्स ओके बिकॉज लाइक ये सीजन कुछ जीतने के लिए है ही नहीं. So we can give this season to Potter anyways. Exactly. There's nothing to lose anyway. How he progresses. Yeah. नहीं, And लेकिन another thing what if he is, takes us backwards, यार? That's the only scare I have. yeah, that is also possible. But we need to understand कि players भी वैसे situation में कि नया system है and नए like Sterling को टुकल ने लाया था and those kind of things. So chemistry नहीं बैठ रही पॉटर में and players में जो I think hopefully improve करेगी. But let's see how it goes. Yeah. Bhai, Syed is still trying to join. Syed, please click on, if I'm hearing me, Syed, please click on chill, which is basically the left hand panel में आपको मिलेगा chill करके एक channel है within my Almighty Blues FC channel, which Shrey has created us with. So Syed, I'm just mentioning that again. Chill के अंदर आप click करिए और आप घुस जाओगे. That's how it is. But I think if I'm not wrong, my confidence is 150% check Liverpool squad, Ankit. Okay, Wolves versus Liverpool बोल रहे हैं भाई. Let's be honest, Syed, with all due respect to Liverpool, I think let's be real यार. पहला मैच आप पता नहीं कैसे लिवरपूल को रिप्ले मिला यार. दैट वाज अ गोल. वुल्व्स का नहीं था भाई. वो कैमरा एंगल और व्हाट रबिश. आई डोंट बिलीव इन दैट शायद. मैं अपफ्रंट बोलूंगा that there is the bias when it comes to English football. I'll be very upfront. People might hate me for saying it, but I am saying it. Over the years, I've seen enough football to say that, and that's a reality in it, that people want लिवरपूल एंड स्पर्स टू गेट. स्पर्स तो इतने मदद के बाद में भी नहीं जीत पाई, वो अलग बात है. लेकिन लिवरपूल, लेट्स बी ऑनेस्ट, दे हैव गॉट इट, बट they have deserved the luck as well a lot of times. ये भी बोलूंगा साथ साथ में. I will not say that is totally fixed etc, but definitely there's a problem there. But that means that Liverpool are winning. I genuinely believe that. Any movements of Quaresma in Chelsea? भाई Quaresma वापस आ रहेगा कुछ भी. Good movement, भाई. That was like he had a bad spell, yeah, simply put. I don't remember any good time. I think it was Nipun, he was Scolari के अंदर आया था ना Quaresma, remember for 6 months he came? I think so. Yeah, it was probably Scolari के अंदर. भाई कैमरा चाहिए नहीं भाई. शायद आप बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे यार. मच लव टू शायद यार, इतना भी डिस्ट्रैक्ट मत करिए. इतना मैं किसी को स्पून फीड नहीं करता. विद ऑल ड्यू लव, Potter knows creative football. He needs creative midfielders. He will stay, and Chelsea fans don't just get irresistible for trophies. Believe in Potter, enjoys tactics. I want to see that GK. But again, coming from someone who has seen umpteen number of managers and seen a lot of Chelsea, who has Chelsea in his dreams all the time, and that's me. मैं अपने बारे में तो बोल ही सकता हूँ ना. Trust me, वो वाइब्स नहीं देता मुझे. That is my viewpoint. I might be wrong. That doesn't mean Potter out. There's a difference. I'm not getting a lot of positive vibes. But now that he's got Mudryk, now that he's got Felix, अगर उसको एक अच्छा midfield मिल जाए, और अगर आप जो GK बोल रहे, if I'm seeing that in the next 2-3 weeks, of course, bring it on. I'm up for it. Because now that is not happened. अगर होना था,
होना था January 1st को, अभी नहीं हुआ तो like continue for this month and then let's see how it goes because we don't have any other choice anyway. Mujahid, Potter will be the right person to answer this. मतलब Nkunku, pretty sure it's not his. Nkunku was already in talks long before. I think we were linked like long before. Mudryk and Felix, as per reports, definitely he has a say, but I don't think it's his preference. I think उसने एक list दी थी, उसमें से दो नाम थे. Simply put, Michael Ballack will definitely be मतलब any Chelsea fans. I think I don't think if Abhishek is still there. Is he around? No, Abhishek is not there. Anyway, Priyansh is in the house. I miss Priyansh. Priyansh, कैसे हो? हेलो अंकित भाई, कैसे हो? अरे कैसे हो भाई? प्रियांश इन बिहाइंड के प्रियांश हो कि कोई और प्रियांश हो ये? अरे वही हूँ, इन बिहाइंड वाला ही हूँ। अरे भाई तो आपको मुझे मैसेज कर देता है, आपको तो पैनल में ला देते भाई, कंटेंट क्रिएटर्स डायरेक्टली आ सकते हैं, अरे कोई नहीं। नहीं, मैं थोड़ा गेम खेल रहा था तो ओ सोचा अच्छा बीच में आ जाता हूँ। मल्टीटास्कर अपने। हाँ। नाइस। तो प्रियांश अपने चेल्सी फैन है भाई, फॉर पीपल हु डोंट नो इन बिहाइंड भी है, बढ़िया चैनल, चेक करिएगा भाई। प्रियांश, ध्रुव, काफी दिन हो गए बात किए ध्रुव से, लेकिन प्रियांश क्या लगता है भाई, माइकल बालाक इज द फ्यूचर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल इन चेल्सी? मैनेजर तो मुश्किल है, लेकिन भाई अंकित भाई जब पीटर चेक हमें छोड़ के चले गए तो मतलब पता नहीं, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीटर चेक, उसको थोड़ा टाइम आई थिंक रुकना चाहिए था, बट ठीक है वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट मतलब आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मतलब क्लॉड मैकालेलेथ है, मतलब एकेडमी में थे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि पहले लोग आए नहीं, बट या इट कैन वर्क्स, बट आई वुड प्रेफर माइकल एडवर्ड जिसको एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का, बट उसको एज यू नो कि मतलब आई थिंक उसने कुछ ब्रेक लिया फुटबॉल से, सो लेट्स सी क्या क्या होता है। Michael Edwards has Premier League experience, but Michael Ballack knows the club inside and out. Exactly. And who really he represents Chelsea very well, Nipun. You have always seen him on panels, etc. I sincerely believe there are very few who are not English, but they love Chelsea, adore them. He's in that category, you know. Well, I do consider well English of Indian origin. I'd like to put it that way. Just because I'm not white, well, pale skin. No, I was talking about Michael Ballack. I thought you were talking about me. No. I was talking to you about Michael Ballack. So the fact is, Michael Ballack, if you've always seen, he represents Chelsea very well. He talks for Chelsea. He's concerned for Chelsea. So for me, like basically speaking, what Priyansh is trying to say is when Petr Cech left, Michael Ballack could have been a great replacement despite not having that experience. Because he knows Chelsea, like you said, right? As in he might have been that perfect guy for me. So for me, the way I looked at this, we needed a sporting director who's more of a Chelsea guy who has Premier League experience, and which is Michael Ballack for me, and someone who's basically a technical director, which is Christopher Wewell. So I think that could work well, Nipun. What do you think? Look, could work very well. And I don't think we're linked to any other sporting directors apart from these. I know that Edwards, if he comes, great with the experience, but I don't think we are linked to many, and that's the saddest part of it. So it looks like Todd Burley and co are okay because they've already rebuilt a lot. So I don't think they're going to get a lot of people. Again, Priyansh, coming back to you here, Priyansh, transfers पर बात हो जाए थोड़ा सा, मतलब what is your reaction on the Chelsea transfers? Where are you? काफी volatility चल रही है अपने fan base में. I would still request you to be patient when it comes to transfers. पॉटर के फुटबॉल के लिए मैं समझता हूँ क्यों वॉलेटिलिटी, लेकिन ट्रांसफर्स यार और नहीं होती है. प्रियांश, वेयर आर यू? मतलब टू बी ऑनेस्ट अंकित भाई, मतलब मुड्रिक के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो मतलब मैंने पहले ही काफी बार कहा कि जो बंदा आर्सेनल के लिए इतना स्टोरी वगैरह डाल रहा था, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर इन माय क्लब. मैंने तो ये सीधा बोला था, जो आर्सेनल जाना चाहता है वो चेल्सी क्यों आएगा. बट अब जब वो आ गया, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता. यूक्रेनियन लीग तो लेट्स बी ऑनेस्ट कोई नहीं देखता. बट ट्रांसफर्स के बारे में तो बात करूं तो भाई अभी भी एज यू नो कि हम काइसेडो से लिंक्ड है, और मोस्ट प्रोबेबली काइसेडो आ जाएगा, आई थिंक आ जाएगा, क्योंकि डेक्लन राइस आर्सेनल से लिंक है. आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ डेक्लन राइस आ जाए क्योंकि आर्सेनल से लिंक है. तो बट या वी डेफिनेटली नीडेड अ राइट बैक. बट यार एंजो के उसमें जो किया था ना, वो बहुत बुरा लगा देख के. मतलब इट वाज वेरी बैड फ्रॉम आवर साइड. I don't rate Declan Rice. I don't rate Declan Rice. He can go to Arsenal. He can go there. I don't rate him. Wow. But don't you feel that eventually Potter likes to play 4-3-3? I know currently he's playing 4-2-3-1, Nipun.
Yeah, all I wanted to see was the end of the 5 at the back. And that's what he's doing. He's doing, at least he's persisting with it. But still, the problem with I have with Potter, let me be very honest. I don't have a problem with him trying to do things at Chelsea which have not been done, which is great, which is a positive thing जो मैं देखता हूँ. लेकिन problem यहाँ पर हो जाती है, Nipun and everyone in the chat, that I feel that Potter strategically he's got it wrong in the 2 matches that did against Man City, for example. He got it wrong. In my one match, yes, we did fairly well, but again he went on the back foot in the second half. I think he should have attacked there. The place where he needs to kind of be defensive. That was the FA Cup game. He was far too attacking, and he went with Lewis Hall, which I like the fact that he's giving a youngster a chance. But for me, Lewis Hall is not a defensive fullback. I think we need cover in such matches, and where I think he's getting it tactically wrong. But again, Manav asking the same question. Like I said, Manav, we don't know the answer to that. What I have heard, Manav, मैंने सुना है आज इंटरव्यू शाख्तार के चीफ से, और शाख्तार के चीफ ने बोला है दैट मुड्रिक के बारे में चेल्सी एक्चुअली परमिशन ली थी दिसंबर में ही बात करने के लिए. तो आई वुड अस्यूम द फैक्ट कि उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, यार टॉड बर्ली एंड को इतने भी मतलब ये नहीं होंगे, और वो 4-4-3 वाले भाई याद है आपको. तो आई डोंट थिंक दे आर फुटबॉल पीपल रियली. तो अगर आप किसी से पूछेंगे तो पॉटर से पूछेंगे यार, एब्सोल्युटली. हाई कुड हैव बीन दैट मुड्रिक शायद अवेलेबल हो सकता है, हम शायद जा कि नहीं जाए, वो हो सकता है. आई वुड टेक दैट, आई एम ओके. अगर पॉटर खुद बोले कि नहीं मुझे प्लेयर चाहिए नहीं, तब अलग बात होती है. आई डोंट थिंक दैट्स अ केस. प्रीटी श्योर वो नहीं आता विद 100 बिलियन इफ पॉटर डिडंट वांट इट. सो प्रीटी श्योर इज द पॉटर साइनिंग. What you call as a Potter signing is, maybe you can say he is my number 1 player. Rafael अवेलेबल नहीं थे, क्वारट्स के लिए अवेलेबल नहीं थे अभी, और अगर पॉटर को चाहिए था एक विंगर, इसलिए हम लाए. अब वो विंगर मुड्रिक है, देखते हैं हाउ ही डज. इन माय ओपिनियन ही विल डू वेल. Mykhailo, Caicedo, Trossard should have been closed, going by pure logic. 100% agreed मानव. लेकिन यहाँ पर वापस से हम अज्यूम कर रहे हैं कि Caicedo अवेलेबल है अगर हम पैसे फेंके. ब्राइटन में भी they don't want, they are resisting. We don't know that. Mykhailo तो एक्चुअली रेजिस्ट कर रही है, बिकॉज Mykhailo ने जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया था. ट्रॉसार्ड और बाय द वे Mykhailo लिटरली वापस आए पिच पर 10 दिन पहले, तो वो भी इट्स मैन्युअली इम्पॉसिबल टू फिनिश दैट डील सो फास्ट. ट्रॉसार्ड आई डोंट अग्री विद यू, क्योंकि हमने फेलिक्स को ले आया. ट्रॉसार्ड इन माय ओपिनियन इज मोर लाइक अ फेलिक्स काइंड ऑफ अ प्लेयर. ही इज नॉट अ प्योर विंगर, ही इज मोर लाइक अ फ्लोटर. So I think we have finished, we have kind of closed that gap already, if I have to quickly say. Chukwemeka, nice central midfielder, some good feedback I can give. He's good, lekin is he a starter? I have my doubts. But anyway, भाई 1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं. मैं 1.5 घंटे से शायद का वेट कर रहा हूँ. शायद ने गिव अप कर दिया, looks like. I tried my best, Shrey, but I think Syed did not want to come on finally, or he was unsuccessful. I don't know. But before we go, we'll take one comment from everyone in the panel, absolutely. और मैं यहाँ पर अगेन थैंक्स करूंगा फॉर एवरीवन इन द चैट टू जॉइन. डू नॉट लीव राइट नाउ, वी आर गोइंग टू फिनिश इन फ्यू मोर मिनट्स. लेकिन अभी भी आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं. मैंने पिन करके रखा है इंस्ट्रक्शंस कैसे जोड़ेंगे. लेकिन वन बाय वन इफ आई हैव टू गो क्विकली, लेट मी स्टार्ट. बहुत देर से कॉल नहीं बात किया यार. यहाँ पर तनिष्क सबसे पहले जुड़ने थे. तनिष्क, फाइनल वर्ड यार, क्या लगता है भाई, डॉर्टमंड बीटिंग चेल्सी और चेल्सी बीटिंग डॉर्टमंड? या डॉर्टमंड बीटिंग चेल्सी. हाँ नॉट डॉर्टमंड बीटिंग चेल्सी. अरे भाई साहब, इतने स्पेंड करने के बाद भी फेलिक्स और मुड्रिक खेलेंगे भाई वो मैच, अगर फिट हो तो. तो मुद्रिक से क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे अच्छे प्लेयर्स बहुत सारे हैं डॉर्टमंड. ये मैं अग्री नहीं करूंगा भाई. यूसीएल में कोरस के लिए मुड्रिक दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. कम ऑन. हाँ ये तो सही कह रहे हो आप, बट अब यूसीएल नॉकआउट तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यू नो. मजाक ही कर रहा था मैं. बट एज अ न्यूट्रल, ऑनेस्टली आई थिंक डॉर्टमंड विल ठीक है, eventually win. All the best for that, yeah. Tanish, again thanks for coming on, यार. Always welcome. We'll do these streams more. और अगर फीडबैक देना तो वो भी दे सकते हैं भाई. ऑफ कोर्स श्रेय तो लास्ट में टाटा बाय बाय करेंगे, तो सबसे पहले श्रेय से नहीं बात करेंगे अभी. आदित्य बताऊंगा मैं. हाँ श्रेय, आई फील बेटर जब चेल्सी को लाइक ओवरराइट कर देते या फिर अंडररेटेड बोल देते, बिकॉज़ एक्चुअली यस, या we do well against the all odds. Yeah, exactly. Like against the Real Madrid, then Man City पकड़ लो.
So yeah, Felix, by the way, was fantastic. Apart from that stupid dive that he took, he was overzealous. Simply put, भाई गुंडोगन अगर अवेलेबल है तो आज मैं ले लूँ यार. लेकिन अगेन अरित्र से बात करते हैं. अरित्र, फाइनल वर्ड्स आपसे यार. बारसा मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या लग रहा है एज ए न्यूट्रल? बोलिए, आप पैनल का मेंबर हो अभी फॉर द टाइमिंग. Aritra, are you there? अरित्र पता नहीं, अरित्र शायद नींद आ गई. अरित्र कोई नहीं. नेक्स्ट हरजस से बात करते भाई. वही क्वेश्चन हरजस के लिए भी है. बार्सिलोना जीत जाएगी. चलो, हरजस कीपिंग अ लो प्रोफाइल on the result. Looks like it. हरजस, reason we struggle against Spanish team. मतलब I don't remember हम last time कोई Spanish team के against convincingly जीत गए. Even Sir Alex के time में. So I don't know, because Spanish teams कभी भी we face, I'm like नहीं हम. I hear you absolutely. चलो कोई नहीं. हरजस, thanks for joining यार. Absolutely. अरित्र शायद म्यूट पर है. कोई नहीं, वो मल्टीटास्क कर रहे होंगे. Let's hear from Manav. हाँ मानव, प्लीज. तो एंडिंग थॉट्स क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैन सिटी एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स क्या लग रहा है भाई? गुंडोगन को दे रहे हो? कहाँ दे रहे हो, बोलो. नो, मतलब अभी तक साइन हो जाना चाहिए था गुंडोगान का एक्सटेंशन. क्या थॉट है पेप का और मैनेजमेंट का? रियली astonishing, क्योंकि given this season he is number 1 in the list of captaincy. So how could you let your captain go on a free? That's a bit puzzling at the moment. But अगर गुंडोगान जाता है then फिर City might have to open doors for another blockbuster midfield signing. Bellingham और Enzo तो नहीं maybe, but Matthias Nunes maybe ऐसी एक signing करनी पड़ेगी, which is more of a long term. Maybe they are preparing for a transition away from Bruno Bernardo and Kevin De Bruyne. Okay, I hear you. बिल्कुल. Again, Manav, always good to talk to you. हम बात करेंगे जल्दी ही, but thanks for coming on always, bro. But one thing, going away. Yeah, please. I don't think Chelsea fans should really have a lot of tension about Dortmund. Going forward, Dortmund can hammer you guys if they are at their best. But from what I've seen Dortmund doing in Bundesliga, they will give you enough amount of space to create between the lines. And if then Havertz, Felix and Mount, they gain some sort of form, I think it could be a turning point in your season. Because Dortmund defense is never the best, even historically. Whenever they have done well, they've always outscored their opponents. So I think this could be one of Chelsea's turning point this season. You don't write Niklas Zula. You don't write Zula. क्या? Nipun, can you repeat that? Do you not write Niklas Zula? Whoever's on that Discord chat. So that's basically a good thing for Chelsea, no? You don't write him. I don't Zula. rate him. No. He's really slow on transition. Is really slow. He's very good physically. Of course, we don't do well physically. That is something that he can be a threat for. But I think if I'm just imagining if you can, if Nicolas Zula is kind of, directly, if your right back is going attacking, if you have Nicolas Zula exposed, Mudryk can take him. I genuinely believe it. Obviously, with the I'm not that Mudryk excited about Mudryk. I'm not that excited about. No. Why so? He has I heard on, like, I think it was on Lee Gunner's stream. Big up Lee Gunner if you're listening. Very sensible Arsenal fan. He has about only I think less than 20 career goals and less than 30 league appearances. See, again, I'm not trying to say I watch every match of the 50 matches that Jude played for, and I know he's not played much either in that. And that doesn't. So for me, that doesn't constitute 100 million price tag. No, but that's the thing I'm saying, that he has actually played Nippon
if I'm not wrong, say about at least 15% of his matches in the Champions League. And in those matches, he in 2 legs in Real Madrid against Real Madrid, he did really well. I know we're just talking about 2 matches, but he is a potentially a very good player. What here I'm trying to say is Mudryk is something which we don't have in the squad. Mudryk is basically a lockdown Pulisic who is better physically. If I have to really explain you what he is, and that is what Mudryk is. He's a lockdown Pulisic, not Pulisic of today. He's a lockdown Pulisic. If people know, they know who is better, who's much more strong. So I feel he can be very good. Of course, he's nowhere close to 100 million. Of course, I'm not going to sit and say that he's 100 million worth. He's worth. But maybe I'm just 50. scared. I'm just scared Of he course, will fall under pressure and flop under that Correct, price and that tag. happens a lot in Chelsea, and that's why we are scared, right? But kahin na kahin, I think I've we been have to scarred. take a I have chance. been scarred before. I don't want that to happen again. But again, for me, like again, maybe it's me and wingers. I just feel that among wingers, if I'm talking about the 5 best available wingers in the world, available, I'm saying young available wingers in that age bracket, I think he's there in the top 5 available wingers in that bracket in the world right now. And if Chelsea need a winger, if Potter needs a winger, is what I'm assuming. I think he was one of the top options for sure, and we have definitely overpaid, and that's Chelsea tax that we've been as in played with. For me, Arteta is not a fool as well. I know I don't rate Arsenal as much as people do this season, but I think at the same time, if Arsenal were going for him at 70 plus 30, we have paid about the same. To be very honest, Arsenal was 70 plus 25, we have played 70 plus 30. That's what we have done. Yeah. So I don't think it's a huge difference, to be honest. So I think But somewhere there's a down the line- media. There's an agenda against Chelsea in the media. Like if Of course Arsenal there had is. paid that much, they would say, "Oh, worth every penny." Exactly. And now we've Remember done when it. Nicolas Pepe first time when Nicolas Pepe happened. Yeah, of course they were trolled for a couple of years later. But the first time Nicolas Pepe happened, people were like, okay, fine. As in, there's some scouting finally. And even I would say Anthony, as much as I rate Anthony, even he's not a 90 million player that Manchester United paid. Let's be honest. But that is what you pay in this day and age. Unfortunately, it is the case. And I know that we've been there, done that. Nipun, I exactly know why you're kind of scared about that. I am there as well. But I'm at least happy that Todd Burley is at least investing and backing Potter, or at least giving him the options. At least he won't have excuses. Let's put it that way. Yeah. Anyway, so I'm not too excited about Mudryk signing too. Again, if you play low profile, it's good. I hear you, just Vaila. Like Shrey said, when you don't have much expectation from Chelsea turn out to be good. So I know I am in the minority, and I know as a matter of fact on social media I'm one of the very few people who's actually excited for Mudryk, and I'm actually excited for Mudryk. Yes, I can hear that why people are playing a low profile. I hear that why this skepticism is One there. thing I'll add up is like the attitude of Mudryk is very underrated also. कि like आप देख सकते हो कि he wants to play and like he has that positive vibe and like that confidence कि I am worth 100 million, you know. Yeah, and it's कि very भले direct. ही We वो lack direct players like anything, यार श्रेय. yeah वो एक चीज true में वो sideways passing से थक गया हो यार, थक गया हो. yeah मतलब we need. I he know आकर बीमारी लग सकती है उसको भी चेल्सी वाली. true वो yeah अलग चीज, निपुण ने बोला, सही बोला. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है he brings something different. जाओ फिलिक्स ने आधी घंटा में दिखा दिया यार वो क्या है प्लेयर. I yeah feel that Mudryk has got that yeah spark in him. like उसे देखते ही लगता है कि he wants to make a change in Chelsea. I hope. You know, I he's just not. hope. I just hope Mudryk benches one of. I hope he benches either 19 or 29. Let's see, let's see. Let's Because hope I'm for the sick best. of both of them. And Let's hope for the I'm best. someone who really likes the Cobham. I'm one of the fans who likes the Cobham players, but he's done enough for me to say he's not good enough anymore. Okay, so basically Mount Havertz, you've spoken enough for that. Yeah. I don't want to go start again on that. Like Nipun, I hear you absolutely. Like I said, Nipun, just to kind of quickly finish on that point, I think Mount and Havertz, I see it. Havertz on form is not a starter for Chelsea, but I will still defend myself and defend Havertz, not for the sake of he was, humble enough to come and meet me, but purely and honestly speaking, people, I don't think he has got enough opportunities as a number 10 in a 4-2-3-1 for Chelsea consistently enough. I think if he fails in that, then I will say Havertz, please, Tata, bye-bye. Mount,
Yes, he is not a starter at Chelsea anymore, but yes, he cannot expect so much salary. Absolutely, he cannot expect. But if he's okay to come down in salary or whatever, Chelsea are okay to offer him, he takes it. I am wanting that player in the squad because I think he understands Chelsea more than many other players, which we lack big time in the squad, and that's the only reason why I want in the squad. And I still believe that we cannot forget he was twice, player of the year just 2 years back. And he was, and also he was crucial in us winning the Champions League as well. Yeah, crucial. Like, if he didn't score the free kick against Wolves, we wouldn't have been in the Champions League and we wouldn't have won it. Yeah. We forget we are short-lived as fans, and I don't know why. This is maybe new school, नया एक फैशन है कि क्या है भाई. मतलब मुझे आज तक याद है जो जोला ने कैरेगर को ग्रास चटवाया था यार, मुझे आज तक याद है वो बात. Certain things you don't forget as a fan. You don't forget. And Mount का जो moment था against Wolves in a lockdown situation, him and Giroud scoring, for me those are two of the most important goals in recent history of Chelsea. People forget Didn't it. Giroud score a hat-trick in that game? No, it was just one goal. He scored the second goal, but fantastic goal at that. But anyway, as in all thing being, he's not a starter. That I agree. But anyway, heartbroken players, yeah, exactly. We all forget. Yes, they are earning lots of bucks, but they are human beings. They somewhere down the line miss that. But anyway, let's hope that Potter, Todd Boehly and Co can get it sorted together. Again, Syed has joined. People, first of all, Syed OP in the chat. हो जा भाई, Syed has finally joined. Syed अपने आप को unmute करिए सबसे पहले. आप mute पे हो. Syed बोलिए. The floor is yours. We want to hear Syed. Come on, Syed. Come on. We are waiting for 1 hour for Syed to join somehow. और Syed join किए भाई, लेकिन Syed अब बोल नहीं पा रहे. बट कोई नहीं, होपफुली आपका माइक ठीक हो जाए. शायद आ गए, वही बड़ी बात यार. Finally was able to one step closer. One step closer. But Tiger Beast is also rejoined. So before we end, Tiger Beast आपसे भी एक वर्ड ले लेते हैं अगर आपका माइक कभी ठीक है तो. Yes, Ankit bhaiya. अरे nice to hear you यार. Tiger Beast, would you like to introduce yourself? Up to you. क्या share करना चाहते हो? Please share it. Please, first of all, thank you for making me the moderator, Ankit bhaiya. I've been watching you for long. You and Rock Baba are, I guess, one of the best content creators for Chelsea in the Indian community, even in the international community though. So I love your work. I love you all as well, yeah, absolutely. You included especially. Please tell me. Thank you so much. So there was also this comment by GK, if I'm not wrong. You have made this all like a family in a community. So thank you so much. Of course, yeah. Big up to GK as well. So Syed, again, you, I think if I'm not wrong, you have been following Chelsea recently, or is it from before? Yeah, so yeah, it has been recently. So it is an interesting journey. So I watched the World Cup, and then I got interested in football, and then I was searching for clubs like which club actually matches my spirit club, which is actually my type of club. And I watched Drog Baba videos, and I also watched one of your videos where you were explaining something about history of Chelsea. Yep. And then it was just like perfect match. So yeah, I found that's great to hear, yaar. Shrey, Nipun, bhai, we are still able to attract fans, and that's something great that I always see. At the end of the day, dekho, after that, you don't I want to have be watched winning, every video, legacy, and everything. That's what Tiger Beast said. Yeah. Relate to so Chelsea. I have watched every Drogba videos, and I've been a big fan. So yeah, but now I have to say 1, 2, 3 points. First of all, this whole Mudryk fiasco, I have also Mudryk as my DP. So I just want to mention that ek baat ye hai ki if it's bad or if it's good, the first thing is this is a business. This is a game of football. Todd Boehly is our owner, and I'm proud of my owner and Graham Potter because they do what's best for our club. So if they beat Arsenal anyhow, and if Mudryk comes and performs, and the 100 million price tag, that's not 100 million for 1 year. That has been said by so many times by Ankit Bhai on stream 7 for the years. past 5 days. Yeah. 8.5 years actually, not 7 years. Yeah, 8.5 years, exactly. Years contract. 8.5 years, 100 millions. That kind of player with 36.9 kilometer तो मतलब FFP में I'm pretty sure मतलब इतना तो मतलब बेवकूफ नहीं होंगे हमारे क्लब वाले कि यार थोड़ा बहुत मैच तो किया होगा उन्होंने करने से पहले. True.
बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ नहीं है अंकित भैया. That is a very good deal. People are just crying because Arsenal didn't get it, and yeah, we wanted True. Enzo, we didn't get Enzo, whatever it is. But the problem with Enzo is they were demanding a release clause of 120 million. That was stupid to play, like stupid to pay it out. Just one-time deal of 120 million, and you and I know, everybody over here in the panel knows, everybody on the YouTube community knows how some players perform in the World Cup. Their prices go all the way up, and then their performance goes all the way down. So it's just a knee-jerk reaction, I guess, on the Enzo wala case. He's Are you talented. just He's the saying best that? player, yes. Are you But just let's saying see that what happens. Whereas Enzo could have been a Mudryk is a flop? young, aspiring talent, and I mean, I am amazed. यार जैसे कि टाइगर चेल्सी के पास बीच विंगर्स आपसे आ रहे हैं. निपुण पूछ रहे हैं कि यार मतलब बेसिकली टाइगर बीच आपका क्या ओपिनियन था कि एंजो माइट नॉट हैव वर्कड इन द प्रीमियर लीग, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? No, I'm not saying that. Enzo Okay. would have been amazing, but I'm just saying paying 120 million for a player who just had a very recent World Cup success as a whole Argentine team, I guess at one-time payment of $120 million, 120 million or whatever that was in the That was a bit currency, too much. it's I guess too much, and it's also attracts some FPP बट players. So थोड़ा that's सा मैं very ऐड bad. करूंगा टाइगर बीच. आई नो दैट बेसिकली ये वर्ल्ड कप वाज मतलब लाइमलाइट में, लेकिन एक्चुअली एंजो फर्नांडिस व्हेन ही वाज इन साउथ अमेरिका एज वेल एज व्हेन ही केम राइट इन बेनफिका मे बी, आई थिंक एवरीथिंग इन बेनफिका अगेन व्हाटएवर थोड़े मैचेस मैंने देखे हैं बेनफिका के, बी चैंपियंस लीग बी द सुपर लीगा, आई थिंक एवरीथिंग फ्लोज थ्रू एंजो फर्नांडिस. ही हैज बीन वन ऑफ द मेन स्टेज, एब्सोल्युटली मेन स्टेज है. इफ ही इज नॉट प्लेइंग बेनफिका डोंट फंक्शन एट टाइम्स एक्चुअली, तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन एट द सेम टाइम हाँ 120 नहीं है. मैं honestly 120 was on the million same thing जैसे I मुद्रिक का था ना guess too वैसे ही एंजो much. के था कि I feel the guys are very good, these guys, but they don't deserve what I don't Chelsea is know, paying. Ankit, we are sorry to interrupt, but I don't know whether Enzo's deal was, I don't know the nitty-gritties, but I don't think so. Enzo's deal was anywhere close to an 8.5-year contract for 120 million. I don't हाँ, think that so. was more like a क्या बोलते हैं Must have अपना been clause था, 4-5 release years clause था. at max. Yeah, Correct. Exactly, you have and great point that's वहाँ पर, the great point because that's the issue. we couldn't have Yeah. paid that at one shot. Yeah, actually, because that attracts the FPP threat, and people have been cursing around Chelsea like their own pockets are on fire. Todd Bowley is demanding money from their Paytm and PhonePe to pay for Mudryk and Zhao Felix. Yeah, what the hell? What the hell going on? Isn't your money? You have to support a club. You have to back Graham Potter. Just back it. No, why Chelsea is paying this? Your club cannot pay that much amount of money. That's why you're crying. Can't you accept it? Liverpool cannot. Liverpool, Klopp is such a good manager, but Liverpool is not giving him pennies to make the good team. Chelsea's Todd Bowley is finally giving us money, injecting new talents. Graham Potter is given the time. We should be happy, but we are crying all over the Twitter. Chelsea fans are divided. It's the time to be united and support our team. But no, we have our own personal financial issues with Todd Bowley. I don't know how it helps the team. Oh, that is stupendous. I mean, that's amusing as a Chelsea fan. Yeah. Yeah, I just want to say about the recent signings. It has been good. I'm not like in chat. Many people will say I'm too optimistic. It's not about optimism. It's just about what are the other options. Should I curse my team? Should I curse Graham Potter? Does it solve any issues? No, it does not. Only thing that solves something, I am happy because Chelsea is actually trying to solve problem. See the last match, Graham Potter, Ankit bhai, you were very angry. I guess आप गुस्सा थे, हम भी गुस्सा थे. In the what match it was Fulham, and he हाँ was यार giving मतलब substitution in 80th 80 मिनट minute. के बाद भी मतलब बंदा आराम Yeah, से चल रहा है मतलब. but he learned from that. जब डिफेंस मजबूत करना था क्रिस्टल पैलेस में, oh he actually Yeah, substituted. His substitutions were spot on. Exactly. Nobody is talking about that because that's the true. propaganda they want to run on the That net. was a good point. At Graham Potter out, Graham Potter out. Why are we not understanding? I'm a recent fan. I can understand this. People are following Chelsea 125, 20 years, 12 years, 15 years. They're talking about Graham Potter out. Hello, come on. Get your senses aligned. Don't you understand the fact we have been doing this for year on, year on, year on, sacking managers, bringing new managers, sacking managers, bringing new managers, and then winning by fluke. Not winning by fluke as in we are winning championship by fluke, but no, the managerial processes, we are winning because of individual brilliances and team efforts, not because of managerial brilliances. Leave Tuchel's
that marvelous performance as a manager for a few more managers. I'm not doubting that. Sacking manager is not the option. And yeah, that was my point. What can Chelsea bring more? Chelsea has been amazing this January window. I'm very proud of my team and the management. What more they can bring? I guess Caicedo, jitni jaldi la dein utna acha. I wanted him to play against Liverpool. I don't think so it will happen now because it's like 18th of Jan now. Yeah, I guess that's like Chelsea can fly a plane to Brighton, maybe bring him tomorrow. I cannot say. I've been doing that this window. London and Brighton aren't too Yeah, far maybe they can apart. bring him. I want Caicedo there. Some people are saying now. Some people are saying Actually. Caicedo is a big faller in the. So you go and play football now. This is like नहीं मतलब तो I know that outrageous. मैं वही बोल रहा हूँ Tiger we are very Yeah, short-lived this as is fans. outrageous, Ankit. Yeah, what the hell? You are pointing out that someone is falling. He's a midfielder. He's a midfielder who defends properly, right? His work is to go and push around people and fall and get up and defend and do the whole midfield job. What else are you expecting from him? He's a strong guy. He's the next Kante. Like 3 days ago, 4 days ago, I was reading a tweet. There was this whole about how Chelsea's new Kante is going to be Caicedo is the new Kante and all that. So I guess the management is signing very good. Rafa Marin was also linked from us, according to Fabrizio. I don't know whether he will come or not. He should, actually. I don't know what is his future. But I really wanted a right back. I don't know. And jahan tak baat rahi, who to get out wali puri debate. Graham Potter is not going out. I'm backing Graham Potter just on the basis that, see, when he was appointed the manager, he won us 5-7 games, if I'm not wrong, Ankit Bhaiya. Yep. We were on a winning run. Yep. In under him. Then Right. there comes the World Cup. There comes lots of World injuries. Cup के पहले भी there was a bad run actually. Before the World Cup and after the World Cup, there comes a lot of injuries, and then the bad run continues. How can you expect a manager with 11 injuries to play change every now and then True. in every match a team and then form a formation and apply his And own half the skills? team not People playing are- for him. People are saying Graham Potter has no play style. नहीं, देखो टाइगर भी Come on, एवरीवन इन द how can हाउस he यार have जब a मैं play गुस्सा style? था ना टाइगर बस एक सेकंड में लेना चाहूंगा आपका ठीक है Yeah, please, Ankit bhaiya. I'll just explain why the reason why I said I'm still not convinced by Potter. It's not the thing. I agree totally. जो बोल रहे हैं वो excuses नहीं है. That's a fact. We cannot run away from that. It's not rocket science. Every day you do not get a Tuchel or a Conte जो आकर बदल देते within 1 week. It doesn't happen that way, right? So that is the reality. Even Pep Guardiola, Klopp जो खुद ने बोला है Potter ने, मेरा ये है कि बार-बार उसे जाना कि I have time, I have this time, I have that time. Plus the fact that his body language, I know that is what he is. Plus the fact that in substitutions, now that Tiger Beast is saying that substitutions he has learned finally. If I see that for the next 2-3 matches, I myself, along with a lot of other Chelsea fans, I'm sure will be more convinced. अगर वो better utilization score करते हैं, मैं फिर भी question करूंगा Tiger Beast even tactically जैसे मैंने बोला. I think as much as he was more defensive against Crystal Palace, even against Crystal Palace, I did not agree with him. The fact that he played Lewis Hall as left back, I think it was putting the guy under the bus. I don't think as much as the guy deserves first team football. मुझे नहीं लगता he's a left back anywhere close to it. So I think that is something that Potter needs to understand sooner than later. हमारे पास options नहीं है, कुकुरे आया है, but आप अगर लाए हो आपके प्लेयर 63 मिलियन पे किए हो तो आप उसको सुनाओ, जो भी करो, उससे परफॉर्मेंस निकलवाओ. आप एज अ कोच इट्स योर जॉब टू डू दैट एंड दैट इज व्हाट दैट इंस्पिरेशनल लेवल मैं अभी तक देखा नहीं हूँ फ्रॉम पॉटर कमिंग. दैट इंस्पिरेशन मोर केम फ्रॉम जाओ फिलिक्स बीइंग ऑन द पिच फॉर 15 मिनट्स. और इसलिए मुझे लग रहा है कि यार इज ही द राइट मैन फॉर चेल्सी इन द लॉन्ग रन. मेरे खुद में क्वेश्चन मार्क है, बट इट्स नॉट नो. बट अगेन टाइगर बीस्ट थैंक्स फॉर कमिंग ऑन यार. काफी हमने बात कर ली चेल्सी के बारे में भाई. शायद मैं लास्ट का 1 मिनट दे सकता हूँ, शायद जैसे ही मैंने नाम लिया शायद गायब हो गई, बट कोई नहीं. प्रियांश, थैंक्स अ लॉट. Nipun, I'll give you the last minute here. I know you've been waiting, but Nipun, please, last word from you. Sorry about the yawn, by the way. First and foremost. First of all, big up to Nipun for being able to come on short notice. Or I know that there's a time difference, Nipun. You always for us. I know that. Again, big up to you for meeting John Terry and sharing with us. Like Nipun, कुछ positive बोल दो within 30 seconds. Come on. Yeah, everyone just subscribe to Almighty Sports and don't worry, just try
Nipun has been waiting, process. but finally the internet is giving The trouble. Nipun, we Oh, heard it's that all just three right. years. Thanks a lot. लेकिन I think the internet is giving trouble. By everyone, even by NS Sports TV में मैं shout out दे रहा हूँ. हर एक डिस्क्रिप्शन में NS स्पोर्ट्स टीवी और चेल्सी पर्सपेक्टिव और आई थिंक फुटबॉल वर्सेस कैंसर 3 चैनल्स मैं करता हूँ लिंक. तो this is something that I would give. Nipun is an almighty goat, always supporting the channel. Been a Chelsea supporter, for so long. Knows his stuff when it comes to Premier League. I know that. But Shrey as well, yeah. Big up to Shrey भी, absolutely. प्रथमेश ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन ये हम कर रहे हैं आज Discord का stream just because of these guys. Again, thanks a lot to everyone who joined in Discord as well. But अभी के लिए इतना ही है. मिलेंगे जल्दी. I know a lot of football is going to start in a few minutes with the FA Cup. So all the best to Liverpool fans. लेकिन we'll be back, of course, with a review tomorrow. So hit that bell notification icon, or of course with FPL streams and whatnot, because it's a great weekend to come. अभी के लिए इतना ही है. Keep the blue flag flying high. But remember, it's always a fan channel for all to see. Love you all. See you soon. Bye. See you.